मैं क्या स्टार्ट किया भाई, ये हो सकता है बिकॉज ऑफ द वीकेंड दैट वाज देयर भाई, दिस हैपेंड, बट लेकिन यस आई एम बैक। वेलकम बैक टू ऑलमाइटी ब्लूज एफसी, अ फैन चैनल फॉर ऑल टू सी। और हाँ, मैं थोड़ा म्यूट पर था फॉर अ फ्यू सेकंड फॉर पीपल वंडरिंग, मैं दो बार क्यों बोल रहा हूँ भाई। लेकिन एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर जॉइनिंग। मंडे, हाउ इज द मंडे गोइंग भाई? बारसा फैंस के लिए भाई काफी अच्छा हो रहा होगा। आई नो रियल मैड्रिड फैंस भाई रियली रियली डिसअपॉइंटेड, but don't worry Real Madrid fans यार, if anybody who are watching, hopefully you guys watch because I know there's a lot to be discussed। क्या आप बेटर कर सकते हो in the Copa del Rey second leg as well as against Chelsea? और again being a Chelsea fan भाई, मैं तो देख actually डर रहा हूँ कि what's to come। लेकिन again coming back to Barcelona भाई, that was some performance। मतलब in recent times आप बोल सकते हो one of the biggest nights at the Camp Nou, definitely मैं बोल सकता हूँ, there's no two ways about it। और वो भी coming back after that first goal, जिस के बारे में हम बात करेंगे। बाय द वे यस, गुरुजी इज गोइंग टू बी जॉइनिंग अस इन जस्ट कपल ऑफ मिनट्स। तो भाई सब लोग, सबसे पहले जो भी लोग जुड़े हैं, लाइक बटन दबा दीजिए। यस, एल क्लासिको बात करना ही है। ऑब्वियसली हम एफए कप, प्रीमियर लीग का बात करेंगे बिकॉज दैट इज व्हाट हैपेंड ऑन द वीकेंड। बट थोड़ा सा जनरली स्पीकिंग, वी विल ट्राई एंड कवर ऑल टॉप 5 लीग्स। तो ऑल टॉप 5 लीग्स के भाई सब टॉप टीम्स के बारे में वी विल ट्राई एंड सी कि क्या है, क्योंकि अभी इंटरनेशनल ब्रेक में, सो इट्स अ गुड टाइम टू काइंड ऑफ रिफ्लेक्ट। What about Chelsea? I know some people will say we are 10th, not a top team, but always a top team, yeah, for me. You know that. Yes, मिलान के बारे में बात करना है। नापोली, मिलान, इंटर मिलान भाई, इंटर मिलान यूए भी था लास्ट नाइट फॉर पीपल आउट देयर हु नो। वी डिड कवर द वॉच अलोंग ऑफ दैट, नॉट जस्ट एल क्लासिको, लेकिन बुंडेसलीगा भी करना है थोड़ा बहुत। तो विल कम टू एवरीथिंग। अगेन सब लोग सबसे पहले लाइक बटन दबा दीजिए। कितने लाइक्स हुए लेट मी सी। होपफुली यू गाइज हैव लाइक द स्ट्रीम। और उतना ही नहीं, मैंने कम्युनिटी पोस्ट अभी शेयर किया है। सो इफ यू कैन जस्ट टेक अ सेकंड, go to the community post of Almighty Blues FC और एक लाइक बटन ठोक दीजिए। कम ऑन, वी कैन इजीली हैव नंबर ऑफ पीपल वाचिंग इनटू 10। वो कैसे होगा? लाइक बटन करना, एज वेल एज इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब, कंसीडर सब्सक्राइबिंग एंड लाइकिंग द कम्युनिटी पोस्ट। एंड अगेन लेट्स डू दैट। yes, by the way members, by the way welcome to the new members as well, not just the old members and mods of course, and every subscriber। लेकिन भाई न्यू मेंबर्स, अगेन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि यार आप लोग मुझे डीएम करिए। आई विल ऐड यू टू द मेंबर्स ग्रुप, देयर इज अ लॉट हैपनिंग देयर वहां पर व्हिच इज प्लान्ड। Supreme Shrestha, nice to see you. Why, definitely Guruji is always around here. He's love and he's going to be joining us. Let's be देखते हैं भाई। Again, I think at the end of the day, yes, hat trick of El Clasico is there, but remember, Real Madrid is still Real Madrid. But अभी के लिए ला लीगा में बार्सिलोना for sure. गुरुजी ओपी for sure. विस्कायल बारसा बोल रहे भाई बहुत लोग, exactly and deservingly so to be honest। आज तो न्यूटन, yes, nice to see you as well। बहुत बहुत दिन हो गया न्यूटन आपको देखे हुए। यस, डेफिनेटली सब लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। क्या मैन यूनाइटेड जीत पाई ये एफए भाई? ये डेफिनेटली यार, दैट इज समथिंग टू बी डिस्कस्ड। और कहीं ना कहीं लक था, बट अगेन डिजर्व द लक, वी हैव टू डिस्कस दैट। वैसे कल आपकी हेल्प कर दी है मैड्रिड को कैसे हराना है दिखाना भाई। देखिए दैट इज देयर, वन एंगल इज यार, अगेन वी कैन प्रॉब्ली गो ओवर मैड्रिड विद द सेम फॉर्मूला जो बार्सा ने अप्लाई किया। लेकिन अगेन ये दो लेग टाई है। अगेन बार्सा हैज बीटन देम थ्राइस रिसेंटली, सुपर कोपा, कोपा डेल रे फर्स्ट सेमीफाइनल और ला लीगा में। अब कैन वी काइंड ऑफ अप्लाई दैट? डू वी हैव, हमारे पास वो पर्सनल है, अब देखना पड़ेगा। अब अगेन दैट्स व्हाई आई हैव गुरुजी टुडे, सो दैट आई गेट द बार्सा एंगल, आई गेट द चेल्सी एंगल, और ऑफ कोर्स मैं मेरा थोड़ा व्यू पॉइंट दूंगा उस पर। एब्सोल्युटली मुसेब भाई इन द हाउस भाई, डेफिनेटली बहुत बहुत बड़ा नाइट था फॉर यू एंड कंग्रेचुलेशंस टू यू एज वेल। बायर्न लॉस्ट अगेंस्ट लेवरकुसेन, एग्जैक्टली। ओके, क्लासिको फर्स्ट, बिल्कुल क्लासिको ही डिस्कस करेंगे। आई वांट टू डिस्कस द क्लासिको एज सून एज गुरुजी इज इन इन द हाउस। लेकिन मैं आपके साथ शुरू करूंगा। एब्सोल्युटली हाँ, कॉस्टम इन द हाउस, ऑलवेज गुड टू सी यू। बिप्रा भाई, आर्सेनल के बारे में बात करना है डेफिनेटली। और हाउ इंजर्ड? ओके, ये मैं मिस कर दिया भाई। इज ही इंजर्ड? एनीवन कैन कंफर्म दैट? क्या हुआ उसको? Thierry Henry was right. Every club in Europe is scared to face Madrid, but Madrid is scared of Barcelona. I remember that statement. बिल्कुल I remember that statement. Football with TSK, nice to see you. आपका चैनल है क्या? Do let me know. I can definitely give a shout out. Hello भैया, what a day for us. संजीव again, congratulations. भाई काफी लोग आ गए। चलो देखते हैं, we'll go for it. Xavi as a tactician. भाई we have to speak to you. We have to speak about it. Xavi, स्पेशली जावी ना, इतना क्रिटिसिज्म मिला उसको कि यूरोप में उसका रिकॉर्ड बहुत बुरा है विद बार्सिलोना। बट एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू गिव हिम ऑल द क्रेडिट जो भी मिलना चाहिए, इन माय पर्सनल ओपिनियन। भाई जावी, द गाय इज बेसिकली प्रूवन दैट भाई ही इज डेफिनेटली एक ईयर टू स्टे। और बहुत लोग बोल रहे थे भाई, मैं लास्ट स्ट्रीम में पूछा था कैन जावी डू अ पेप ग्वार्डियोला, और भाई यहाँ पर आई थिंक द पैनल एंड सब्सक्राइबर्स आर लाइक कम ऑन, हाउ कैन यू कंपेयर दैट? ऑफ कोर्स मैं कंपेयर नहीं कर रहा था, but what I'm trying to say is that when you're talking about Xavi, he is someone जो he knows exactly जो बार्सिलोना को चाहिए। तो
ऑलरेडी बारसा टाइप, जो बारसा डीएनए उसके अंदर है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट ही हैज समथिंग एल्स, दैट इज बेसिकली एक विनिंग मेंटालिटी। और याद है लास्ट 12 महीने पहले यार, स्वागत, तो रिमेंबर एवरीवन इन द हाउस भाई, बारसा फैंस, इवन मैड्रिड फैंस, इवन भाई एनी यूसीएल फैन विल नो, जो बायर्न म्यूनिख के साथ हुआ था 12 महीने पहले। आई रिमेंबर दैट गेम एग्जैक्टली, एंड दैट टाइम Xavi was like, oh my god, at half time that बहुत सारे लोगों को इतना नहीं मालूम what it means wearing the Barca jersey, और that is what कल आप देखो, मैं दिखाने वाला हूं आपको tactics, and that is something that we have to speak about because we all knew कि पेड्री बाहर है, and I know this is a big deal for Barcelona, but at the same, भाई, he decided to use Sergio Roberto from the start and not Kessie, लेकिन again he brought on Kessie भी, and I think somewhere down the line Sergio Roberto has proven कि यार मतलब he should not be getting इतना बैंटर जो भी डिजर्व कर रहा है, बिकॉज कहीं ना कहीं 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंसेस किए उसने रिसेंटली। अरे भाई क्या टाइमिंग है, गुरुजी इज इन द हाउस। गुरुजी व्हाट्स अप ब्रो, क्या हाल है? What's up, sup guys? कैसे हो सब? कैसे हो अंकित ब्रो? ब्रिलियंट। मैं वही अभी शुरू किया था एल क्लासिको डिस्कस करना, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल भाई गुरुजी ओपन द हाउस हो जाए सबसे पहले। एंड अगेन फॉर पीपल हु डू नॉट नो, गुरुजी हैज लिव्ड अ लाइफ टाइम मोमेंट जस्ट अबाउट 48 आवर्स अगो, मीटिंग हिज लाइफ टाइम, एंड वी ऑल नो दैट। हम इतने बात किए भाई, मी एंड गुरुजी हैव डिस्कस सो मच अबाउट हैसलबैंक, राइट? और मुझे लग रहा था, तो मुझे कॉल आई थी 2 दिन पहले गुरुजी, एंड आई एम लाइक ओ माय गॉड, पहले बोलता तो मैं भी प्लान करता यार, लेकिन अगेन द मोमेंट ऐसा गुरुजी इन द स्नैप्स, मैन आई वाज लाइक वाओ, who had at called least you? भाई one of us is there. For Mumbai, right? To Yeah, come to yeah, Mumbai? exactly. मतलब यहाँ बैंगलोर टू मुंबई भाई 2 दिन में कहाँ से प्लान करूँ, तो that was how it हाँ. was. लेकिन how was the experience यार? Firstly, you have to tell about that. Come on. It was amazing. I mean, it was amazing. We were also discussing the fact if Hasselbank can come in place of Havertz and can start playing immediately. So that was also a And the question that was bangers posed that he to used to him. score, man. Seriously. Yeah, that was a question I was posed to him. Sadly, couldn't take मैं एक 1v1 पिक्चर में नहीं ले पाया। 1v1 पिक्चर क्यों बोल रहा हूँ, बट फुटबॉल टर्मिनोलॉजीज आई टेल यू, बट वैसा पिक्चर में नहीं ले पाया, ग्रुप फोटो ही लेना पड़ा because he had a very packed schedule. Also met Olivier Buzaglo as well. For everyone who doesn't know, Olivier Buzaglo is a pretty knowledgeable Chelsea influencer as well. Arjun Kapoor Yes, yes, of course. तो it was great. I mean, Jimmy Floyd Hasselbank का autograph भी ले नहीं पाया because it was such a privileged kind of an event, but just to meet him and just to hear him talk, just to stand beside him as well, on my WhatsApp DP that's there, just to stand beside him as well, that was amazing. I just told him straight up, then I told him straight up that Jimmy, huge, massive fan, like massive fan. I know, मतलब we have literally done streams together, Guruji. I remember that we spoke about Gudjonsen Hasselbank partnership. I think at least 2-3 stream dedicatively we remember हमने किया था all time 11 वाला Jose Mourinho और pre मतलब Abramovich era वाला हमने किया था। मतलब we literally did that, and I remember we spoke in detail about it. उस टाइम पे आई थिंक इवेंट के टाइम पे लोग बोल रहे थे कि यार हैसलबैंक से बेटर लेजेंड लेके आ सकते। मैंने उनको ही बोला कि देखो, ड्रॉगबा भी आया था इंडिया एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। सो ड्रॉगबा का एक ईरा था, एंड ड्रॉगबा के पहले वाला जो चेल्सी ईरा था, that comprised a mini era that comprised of Hasselbank and Gudjonsen, and we still don't have a striking partnership like them up until now in Chelsea. Like 10 साल हो गए, 2001, 2002, 2003 मैं बोलूँगा, 2002, बस वही समय था गुडियॉन्सन हैसलबैंक, देन 2 साल के लिए क्रेस्पो ड्रॉगबा थोड़ा सा, फिर क्रेस्पो सॉरी अनेल्का ड्रॉगबा थोड़ा सा, यू कैन से, बट Anelka Drogba clicked, पार्टनरशिप पर से। yeah, but Gudjonsen and Hasselbank, you can't beat them because the level of competition at that particular point of time in the Premier League was also great. And considering the fact that we were considered a mid-table side, I would still say we were considered a mid-table side at that particular point of time. For them to bang in the goals at that regularity, बहुत सही बात थी, बहुत सही चीज थी. So I think Hasselbank का contribution to Chelsea, whatever you say, he's a Chelsea legend, and it was amazing. The whole evening was amazing. Absolutely. Chalo bhai, and that is great. And of course, bhai, Guruji also one more special thing. We all know that he has a soft corner, bhai. And again, El Clasico जो था भाई, मतलब Guruji, let's be real. It's kind of done, right? There is absolutely अब तो mathematically बोल सकते हैं at the most. लेकिन is it, firstly, I know हम Xavi के बारे में बात कर रहे थे about the tactics and what he applied. लेकिन सबसे पहले first reaction as a Chelsea fan also I would like to know कि यार now that Real Madrid are out of the equation, or at least
मतलब रियलिस्टिकली राउट. तो इज इट गुड और बैड फॉर चेल्सी यार? यहाँ बारसा फैंस बोल रहे हैं हमने दिखा दिया 3 बार कैसे बीट करना रियल मैड्रिड को, तो दैट्स गुड. बट एट द सेम टाइम रियल मैड्रिड आर लाइक ऑलरेडी नाउ फॉर द यूसीएल. व्हाट डू you think? See, Javi, like Muktesh had said, and many people are saying Javi has a lot of problems. Lot of things. बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें बोलते हैं जावी के मैनेजमेंट के बारे में. ये सब टैक्टिकल न्यूज मिसिंग है, ये मिसिंग है, वो मिसिंग है. But he always turns up against Madrid. So he always turns up, like his Barca side Yep. almost always turns up against Madrid. So I mean that is something that is commendable. And also जब आप गेम के बारे में ही देखें तो uh, it's just that आप जब डट के खेलते हो, ठीक है, जेन्युइनली आप जब डट के खेलते हो, तो that showed a lot in Barca's game as well. They marked out key players as well very necessarily. They marked out some really good key players. I don't think so Benzema had enough of a say in the game as well. Modric Right. had a say definitely because Barca was keeping such a high line, and Modric दो तीन ऐसे passes उसने split किए between the lines कि हम सोच रहे थे कि shit यार ये बुढ़ा कब होता है, ठीक है, मतलब why doesn't he fucking age, ठीक है. तो ये सब चीजें, these were some things that we were thinking, but then again there were always runners to cover that those vacant spaces in behind, and to nullify the threat of Madrid and to contain them. And जब आप पर्सनल के बारे में बात करोगे, अगेन पर्सनल के बारे में 60 मिलियन के अंदर जो 60 मिलियन के अंदर ही ना ये पूरा का पूरा डिफेंसिव बैक फोर बनाया है बारसा ने, ठीक है. 60 मिलियन के अंदर ही पूरा का पूरा डिफेंसिव बैक फोर जो बनाया है, एंड दैट एक तो डिफेंसिव हमारे बैक से फोर लिए, इनफैक्ट एक तो टेक्निकली हमारे से एक लिए. सब्स्टिट्यूट भी हमारे से, लेकिन हाँ, आई नो व्हाट हाँ यू मीन. एग्जैक्टली, बट वो जो हमारे से जो लिया, he had a brilliant game against Madrid. You need those. आर्ग्युबली भाई वो 2 गोल्स मार भी सकता था ऑन टॉप ऑफ द ऑलरेडी गुड गेम ही हैड. So to beat Madrid, definitely you need to have a very good, solid defense. I genuinely believe that it all starts from the back. Okay, you genuinely need to have a good, solid defense, to have a composure, to have a composed mind, to then go on the attack and to go on the front foot. If you have a shaky defense, you'll always concentrate on not letting goals, on not letting Vinicius see the greens, not letting Benzema get the positions that he can get in. You will always concentrate on that, and you will not concentrate on going forward. So इसीलिए I think Barcelona ने अपने basics in terms of defending, they got it spot on, absolutely spot on. There were times when थोड़े से risky moves करे थे, when Koundé, Christensen were pushing up high with their men. So at one point of time, there were like 3 men in defense because Koundé had pushed up high. Christensen sometimes used to push up high to mark, to just be like a Fevicol बेंजेमा के साथ या कोई ऑपोजिशन अटैकर के साथ. अगर कोई ऐसा ऑपोजिशन अटैकर शायद टर्न लेके चला जाता तो इट कुड हैव कॉज प्रॉब्लम्स, बट देयर पोजीशनिंग in those times were amazing. So even if you're committing to something, you need to commit very wisely. So I think that's another lesson that we learned, and you just need to just push the ignition button up to the max when you're playing against Madrid, and it's all starting from the defense. So that is my learning from this. वेल सेड एब्सोल्युटली, एंड आई एग्री कहीं ना कहीं. और मतलब अगेन, मतलब दिस मैन कैसी यार, मतलब मैं सर्जियो रोबर्टो के बारे में बात कर रहा था शुरू के स्ट्रीम में. मतलब कहीं ना कहीं दीज आर टू गाइज. आयरनी यही है ना, द बिगेस्ट आयरनी कल रात को मुझे लगा दैट ऑफ ऑल द पीपल यू हैड फ्रैंक कैसी एंड सर्जियो रोबर्टो स्कोरिंग, एंड दीज आर टू गाइज. मतलब इवन बारसा फैन से बहुत डिस्कस किया हुआ, एंड कहीं ना कहीं दे से दैट कम ऑन एज वी कुड हैव हैड अ बेटर स्क्वाड, एंड अगेन लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन इन टर्म्स ऑफ लीवर समर में, हमें पता ही है चेल्सी फैंस, एंड दैट्स समथिंग दैट they have criticized. लेकिन at the same time यार, you have to give it. Recent weeks में I think there have been quite a few occasions जहां पर सर्जियो रोबर्टो और कैसी बहुत यूज किए गए. मतलब for La Liga, the fact is Xavi kind of plays at 4-man midfield जब in Pedri's absence, with that diamond, with maybe Sergio Roberto on top of it, or Sergio Busquets behind it. कहीं ना कहीं as in that has worked, right? Because Balde or Araujo kind of likes to kind of bomb on. So do you think that is a major the battle आप बोल रहे हो ना, where the want to win was clear, लेकिन कहीं ना कहीं Xavi is also as in making sure कि भाई at times there are almost 6 men in that midfield line.
So do you think that is a tactic that maybe Madrid did not read much, and they kind of made a very late substitution? Because I think 63rd minute tak they were waiting for substitutions, but could they have done something else in midfield, you think? No, I don't. I don't think so. I mean, I genuinely don't think so. That was the reason as well. I think if you talk about Sergi Roberto as a whole, so Sergi Roberto and Frankie De Jong and Frankie De Jong, both of them from the midfield, they worked really well together. Yep. They clicked really well together. They were in balance as well. Like if one had to move forward, one was very aware of the fact that okay, fine, even if I have to move forward along with the other person, I need to cover back to support my defense as well on the counter. And these were when you talk about cutting passing lanes, they were cutting passing lanes also really well, and they were playing with Madrid on different wings. So there was a certain thing that I had noticed, that they were not switching flanks much. मतलब वो अपने डायगोनल बॉल ज्यादा नहीं डाल रहे थे. वो अगर कर देते तो काफी स्ट्रेच होती मैड्रिड की डिफेंस, वो भी एक चीज है. बट उनका एक डिफरेंट प्लॉय था कि आप अगर लेफ्ट विंग आपने चूज किया है तो लेफ्ट विंग पे आप क्राउड आउट कर लो अपने ऑपोजिशन को, अपने ऑपोजिशन प्लेयर को आउट नंबर को, ऐसे 4v2 वाला सिचुएशन क्रिएट कर लो, एक पैटर्न बना लो, और वो कॉम्बिनेशन खेल के आप देन डायरेक्ट रन्स बना लो. सो आपके लेफ्ट पे गावी एक डायरेक्ट रनर है, आपके राइट पे रफीनिया एक डायरेक्ट रनर है. So they had these options to trouble Madrid, and they started playing for set pieces a little bit more in terms of progression. So अगर आपके सेंट्रल से प्रोग्रेशन नहीं हो रही है, yes आप विंग से कर रहे हो फॉर अ लॉन्ग अमाउंट ऑफ टाइम, ऐसे क्रॉस एंड इंशाल्लाह वाला प्रोग्रेशन चल रहा था. बट सेकंड हाफ में ये देखने को मिला कि it was a lot more smoother. The passing combinations, the patterns were a lot more smoother, and I think that is what worked. The directness in running and the directness in passing, that is what exactly worked. वो I think Barcelona जो एक गोल खाया भी था, it was when defenders, when the center back was dragged a little bit interior, and आपका जो full back था शायद I think कुंडे था, वो कुंडे काफी टच लाइन बाई लाइन की तरफ ड्रैग हो गया था, एंड पूरा का पूरा नानी स्पेस आ गया था लेफ्ट चैनल पे, जिस पे विनीशियस दौड़ गया. तो ये चीज बार्सिलोना ने शुरू कर दी सेकंड हाफ में. दे वर वेरी आई थिंक बार्सिलोना लैक्ड वन थिंग इन द फर्स्ट हाफ, दैट वाज movement. In terms of off the ball movement, a little bit more off the ball movement was required in the first half to trouble Real Madrid a little bit more. उन्होंने सेकंड हाफ में वो भी शुरू कर दी, and that is what confused Real Madrid a lot in terms of the system, because let's face it, the players that they have, you can either employ a 4-3-3, you can employ a 4-2-2-2, you can employ a 4-4-2 diamond. So Right. all of these things we started seeing all of these formations in the game in the second half, and that's what confused Real Madrid. और रियल मैड्रिड का ये भी मतलब वेरी वेल पुट अगेन. लेकिन रियल मैड्रिड का कॉन्टेक्स्ट भी तो था, दे हैड टू गो फॉर अ विन. ऐसा नहीं था यार दे कुड हैव जस्ट सैट बैक. थोड़ा सा मैं वही एंचेलोटी से थोड़ा सा मैं मतलब आई एम अ ह्यूज एंचेलोटी फैन एज वेल. लेकिन मैं बोल रहा हूं यार, द फैक्ट इज जब वो एक गोल आया ना, यू कैन से आर्ग्यू द राहो कुड हैव प्रॉब्ली हेडेड इट हार्डर, लेकिन अगेन लक था, वो ओन गोल हो गया. बट आफ्टर दैट I felt कि थोड़ा सा they were sitting back a little bit more than what I would have ideally wanted if I was a Real Madrid fan. तो मुझे लगा कि between that say 10 minutes and वो 40 minutes वाला period ना, half an hour, they probably could have taken more. But again, credit to Barcelona that I think they actually the other explanation to that is Barcelona's attackers were pinning their defensive line rather than them Lewandowski sitting dropping back as well. That they were helped. pinning their defensive line, so they couldn't move further up, and that is why they were trying to be a lot more direct, trying to find Vinny like countless amount of times, and then Vinny like at one point of time, if Araujo was not able to contain Vinny, 2v1 पे आ जा रहे थे. Busquets was supporting Araujo, there was another person who was supporting Araujo in containing Vinny, and जब भी interior आता था, cut in करता था Vinny, then there was a person already there to dispossess Vinny at that particular point of time. So the support system when it came to the defense was really good. As I said, like it all began from the defense for Barcelona in this game. नहीं वेरी वेल पुट अगेन. यस अगेन सौरदीप, थैंक्स भाई. मैं कमेंट्स जितना हो सके हाईलाइट कर रहा हूँ, एंड ऑफ कोर्स मैं स्टार भी कर रहा हूँ कुछ कमेंट्स. मैं देख रहा हूँ भाई करीबन 200 पीपल आर वाचिंग एंड वी आर लाइव फॉर द लास्ट 20 minutes. भाई दिस स्ट्रीम शुड हैव मिनिमम 200 लाइक्स राइट नाउ, एंड
everyone here. Yes, Guruji is back absolutely. So let's actually subscribe to Adidev Guruji, Almighty Sports Plus, Almighty Blues FC. Come on, we all can do that absolutely. और यहाँ पर हमने बात करना है about all the top 5 leagues से top teams. बहुत सारे conversation हमें करने हैं. Hopefully we'll get through that as well. What next for Madrid? I think they will put everything in second leg of Copa del Rey, but it's in our home, so big up. भाई अब Madrid के लिए भाई, to be honest, if worst case scenario, if they lose say Copa del Rey second leg and maybe I know as a Chelsea fan just hope है अभी हम आएंगे Chelsea पर, लेकिन बाई चांस अगर lose कर ले, I think Real Madrid also, as, with all due respect to Carlo Ancelotti, I think probably there is a probably change coming, right? They have to really buck up. Or again, they are still world champs in terms of World Club Cup. लेकिन Madrid has been बहुत flat लगी यार. there is something missing. Is there something that we have missed? But like लिवरपूल के साथ बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था, but apart from that, I'm not really seen the Madrid last couple of months के लिए नहीं. Yeah, I mean, Madrid ka game plan is becoming sometimes very slightly predictable. I mean, you see that they also push to play for set pieces. They know how to close games. To be very honest, they don't really know how to close games. But when they have to chase after a game, sometimes abhi recently ऐसा लगे, but they were perfect chase masters भाई. At one point of time I was like, Madrid के against कोई goal मार दिया है तो I think just for betting purposes Madrid are letting other people score against them first. और कल almost हो भी गया था Asensio का, just about inches, right? We're talking. You never know. And their defense has, as Utkarsh pointed out as well, the defense has also become slightly more vulnerable recently. I mean, when you're looking at the likes of Rudiger, when you're looking at the likes of Militao, they are pumped up every time. They are really pumped up, but it kind of underpins the fact कि भाई आप जो on the pitch जो performance zero, it's not exactly matching the levels of energy or the levels of commitment that you're showing on the pitch. That is Madrid recently, and that is very much noticeable. To be honest, you can disturb that defense. Let's just be very clear. You can disturb their defense. You can stretch them. To be very honest, जैसे मैंने बोला बार्सिलोना के against भी when they were playing these close combinations in one wing, you could see that Madrid had a Madrid's defense was pushed very much to the wing in which those close combinations happening. So Balde had ample space on the left, so one diagonal could have just split the defense in half. At that, there were multiple instances at that particular point of time. Chelsea can take absolute, Chelsea can take absolute, Chelsea can take absolute pleasure from this particular fact because of the fact कि भाई हमारे पास एक player है जो ऐसे diagonals डाल सकता है, वो है हकीम जियेश, ठीक है. तो आप you can definitely think of playing him on the right. Okay, you can definitely think of playing him on the right against Real Madrid and just start playing those close combinations on the right, suck in the defense of Real Madrid completely like they were sucked in by Barcelona yesterday on 2-1 wing, and then ping one diagonal straight to the left where probably you may have a Mudrik or you may have anyone and Sterling who can just then be a direct runner because both of them are really direct. And also the fact that if we are playing the first leg at Bernabeu, the pitch is काफी बड़ा pitch है. ठीक है, तो वहां पर आई थिंक स्पेस कैन बी, मतलब जो वर्नर ने किया था लास्ट सीजन या अपन लोग साथ भी देखे थे. आई रिमेंबर दैट मैच एग्जैक्टली लाइक यस्टरडे ब्रो. अरे इट वाज सो क्लोज, दैट वाज रियली इमोशनल इट इटसेल्फ. लेकिन भाई कारवाहाल का बहुत लोग बोल रहे हैं, इसलिए मैंने कारवाहाल का पिक्चर भी डाला था. कहीं ना कहीं वो मोड्रिक वाला पॉइंट जो गुरुजी ने बोला, आई एग्री. लेकिन अगेन मतलब कारवाहाल का सी it's very difficult, right? Madrid fans, I would love to know your opinion as well in the chat. लेकिन Carvajal is the kind of guy जब मतलब he's at times he's really good, at times मतलब he has a performance like yesterday, and again injuries is an issue. तो अगर लाते भी है, is he the kind of player you think that will be okay with second choice? मतलब that is the main issue, right, with Carvajal kind of players. I mean they have an issue on the right. Let's face it, Madrid do have an issue on the right now. They add Carvajal. Yes, you can argue. I'm not saying that yes, he's a big game player. I'm saying you can argue that he's a big game player. There can be a massive debate on that. पर अगर आप देखोगे उसके लिए एक natural quality replacement नहीं है. Lucas Vazquez is, I don't think so, correct, is a quality replacement. Ziola क्या नाम है उसको, वो भी है, but I don't think they played him. Quality replacement नहीं है. So I genuinely feel that
that is a handicap that they do have, and they are being exploited on that flank quite a lot. So आप वो चीज़ भी आप देख रहे हो कि वो चीज़ हो रही है, and आप लेफ्ट पे भी कल आप देख रहे थे, yes, Nacho does play for the fouls. Nacho is in kind of like an ugly player as well. So but अभी जैसे अभी फॉलोन मेंडी भी अभी थोड़े फिट हो गए, फॉलोन मेंडी भी आएंगे. So how will that impact our game? Uh, that's also pretty what do you say, that's also pretty much out there. But abhi, just talking about Dani Carvajal, that flank is very much in danger for Real Madrid, and I think the Madrid fans also understand that. नहीं, fair enough. I hear you on that as well. लेकिन यहाँ पर माना बोल रहे हैं Enzo can play the diagonals, and from what we saw yesterday, Chilwell and Pulisic can really trouble Carvajal. James Mudryk can similarly attack. भाई होप मत दो यार, मानव होप है, it keeps us alive, I know, but I know that is always there थोड़ा सा, लेकिन भाई to be honest होप ही है, उससे ज्यादा है नहीं, to be एकदम सच में बोलता हूँ तो लेकिन हाँ, ऑड्रेजोला को टाइम देना चाहिए, you can argue, but यार वही है, मतलब एंचेलोटी इज एक्सपीरियंस्ड इनफ टू नो, और उसने बहुत बड़ा स्टेटमेंट बोला. आई नो ही काइंड ऑफ सेड कम ऑन, ही इज अ मैनेजर ऑफ रियल मैड्रिड, वो नहीं बोलेगा कि यार मतलब ही वुड नॉट लाइक टू पुट देम डाउन, क्योंकि ऑलरेडी दे आर हैविंग फ्लैट परफॉर्मेंसेस. सो आई थिंक ही ट्राई टू बिग अप द टीम इन टर्म्स ऑफ द स्टेटमेंट. या लेकिन हजार्ड के बारे में क्लियरली बोला दैट आई एम नॉट हियर टू काइंड ऑफ पिक पीपल ऑन द वेजेस, सिंपल एज दैट. एंड आई थिंक समवेयर डाउन द लाइन बाय एंचेलोटी, हम काफी बार, मतलब ये मैंने बोला कि एंचेलोटी माइट बी आउट अगर हम जीतते हैं मैड्रिड से, बट गुरुजी टू बी ऑनेस्ट Ancelotti is one of the GOAT managers. यार, come on, he knows his stuff. I don't think हम उसके question कर सकते in terms of basically, as in picking. I'm pretty sure उसने नहीं देखा होगा in Odriozola etc. that they're not doing enough. Even Rodrigo as a start, there was a argument कि यार उसको start करना चाहिए था, but again, वो एक tactic के साथ गए. It kind of didn't work, but almost, Asensio almost scored it. So who knows, right? That could have happened. But again, yes, Devesh, let's get to 200 likes, absolutely. And yes, Guruji is back, absolutely. So भाई गुरुजी के चैनल पर भी absolutely hit that subscribe button, और हमारे चैनल में भी do not forget to do those things, very very important for every streamer. Big up to everyone भाई. लेकिन come on, we have to kind of move on. लेकिन generally speaking, what are you saying, Guruji? Like, मैंने पोल भी डाला है बारसा का. Are you convinced that basically now that La Liga, pretty sure they're winning it, that what do they need का next, क्या आप लाओगे if you're a Barca fan, and then they are there to stay, right? और अभी भी यार जो यूरोप में डिसअपॉइंटमेंट्स हुए, इज इट समथिंग दैट इज अ बिट क्वेश्चनेबल? Yes, but I mean, they should not be thinking too much about it. I mean, there have been criticisms about Lewandowski's finishing as well in recent times. So I'll not jump the gun and say that they need a striker and all of that stuff. They don't. I generally don't feel that they do need a striker. I would like the fact that if they got a left winger who can double up as a striker, because आप बोल सकते हो कि आपके पास आंसू फाटी है, there's Ferran who can also play there. But I'm just saying from a competition perspective, just to compete a little bit better, I feel that is the zone, so that if any one of these two guys who, if they have an off day, right, and they do have their off days a lot, we can probably think of bringing one proper consistent player on the left who can definitely deliver. When it comes to Rafinha as well, Rafinha had a wonderful game yesterday, but he's also, and he stepped up in terms of when Dembele's absence, he's definitely stepped up. But you also don't feel the sense of security that you felt when Dembele was playing in place of him. So it boils down to that aspect itself कि मतलब अगर आपके फर्स्ट टीम प्लेयर्स में से कोई भी इंजर्ड हो जाता है, yes, there are replacements, there are good replacements, but they aren't, it is again arguable that are they at the level of the players that have been injured, right? So एक्चुअली स्पीकिंग गुरुजी, सॉरी टू कट यू, यहाँ पर बिग शाउट आउट टू वी टॉक फुटबॉल. बाय द वे, ये अपने पीएसजी फैन है, तो इट कनेक्ट्स दिस कन्वर्सेशन. और ऑफ कोर्स लविंग द स्ट्रीम भाई. अभी को बिग शाउट आउट पीपल हु आर हियर. यस, एब्सोल्युटली, गुरुजी के चैनल को चेकआउट करिए, व्हिच इज इन द टाइटल. हमारे चैनल को चेकआउट करिए, फर्स्ट लाइन द डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा, दोनों ही चैनल्स. बट आई ऑलवेज आल्सो टैग
We Talk Football, Chelsea Perspective, 8744. These are three other channels which are like, part of the Almighty God family here. Come on. So let's hit that. And again, newer people in the community, let's back them as much as possible. और ये क्यों कनेक्ट करता है और इसलिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पर रुका क्योंकि I was hoping गुरुजी like behind him there's a poster everyone we all know that Lionel Messi का conversation और meanwhile हाँ, दो Messi getting posters है booed, मेसी के. Barcelona winning La Liga possibly अभी यहाँ पर We Talk Football मुझे याद दिला रहे भाई maybe Messi का मतलब again PSG fan would not want I don't know We Talk Football do let me know if you want him to kind of leave definitely not यार वो boost तो they're not fans really लेकिन Messi coming back like that is a realistic conversation अभी but is it not? It is. It is. I mean, it's also kind of a realistic conversation that he comes out of the Stamford Bridge tunnel. That is always bhai with Burnley Bowley at यार the helm. With Bowley at the helm, लास्ट गेम में भी यार you can't rule it out. एफ इन शीट गेम करके चले गए अब बोली तो बोला है अभी भी we have to go to next level in terms of transfer भाई मैं market तो बोल रहा हूँ भाई let's do a swap deal. Ziyech last time नहीं जा पाया. Let's do a swap deal. Ziyech for Messi. what a swap deal. What a swap deal. Yeah, but that's interesting. But definitely भाई सब लोग बोलिए मतलब in case Messi goes मतलब that will be huge. इसलिए मैंने रफीना का डाला था that कहीं ना कहीं as much as I know Barca fans will want that. लेकिन फाइनली जब रफीना थोड़ा सा चल रहा है एंड थिंग्स आर गोइंग वेल एंड ऑफ कोर्स डेम्बेले का इफ एंड बट है इन टर्म्स ऑफ इंजरीज लेकिन आई फील दैट आई थिंक बार्सा गोइंग इन द राइट डायरेक्शन मतलब ऑब्वियसली मेसी कमिंग बैक टू बार्सा मेक्स सेंस एट सम पॉइंट बट इज इट लाइक रियली नीडेड राइट नाउ ऑफ कोर्स यू ऑलवेज वेलकम मेसी नो टू वेज अबाउट इट लेकिन वो एक चीज है आई डोंट थिंक ऐसे एकदम अर्जेंट मतलब आई थिंक बार्सा डूइंग वेल वो यूरोप का जो फेलियर्स है आई थिंक दोज आर मतलब again more with experience they'll improve that's my honest yes absolutely and Sunny ने भी ऐसा ही एक statement मारा है कि they could have done better in Europe but it was a very new team they had injuries got the most difficult group and refereeing decisions went against us bad things happened at the same time and bad luck I don't say luck पे ज़्यादा मैं जाना चाहूँगा but when you said bad things happened at the same time I think the teams turned up at the wrong time for Barcelona. Their opposition turned up at the wrong time for Barcelona. I think United had a United season at when Barca faced United. United were absolutely in a brilliant run of form, and they were looking good on the pitch, right? So I think they faced United at a very wrong time. Okay, so that is. I think that is the situation. I think situation wasn't right for Barcelona, and I think they've got the team. They do have the team, barring like one or as I said, the player के the personnel के बारे में तो मैंने अभी बात की. If they can think about rectifying that, that would be great as well, and that could probably boost their Europe ambitions as well. जब अगेन यार मेसी अगर अवेलेबल है तो काफी लोग ट्राई तो करेंगे हाथ पैर तो मारेंगे इसलिए बर्ली का कॉन्वर्सेशन हम कर रहे थे धीरे धीरे बट अगेन यस पीपल लेट्स गेट टू ओवर 200 लाइक्स राइट अवे वी कैन इजीली गेट टू दैट बाय 225 पीपल वाचिंग अगेन एवरीवन आई एम गिविंग अ शाउट आउट बाय आदिदेव गुरुज्ञान Almighty Sports Plus, Almighty Blues FC, 8744, and We Talk Football and Chelsea Perspective as bhai. Yeah, definitely it's part of the Almighty fam. Let's go there. People trolling PSG. Bhai log, we are only 52-year-old in football. Already made a name in industry. Trophies are loading. Chalo bhai. Koi nahi. I didn't mean to do that bhai. Abhi my brother yaar. लेकिन यार कहीं ना कहीं वही है. PSG project is also we all know that it is मतलब at that stage अभी अगर they let go Messi and Mbappe man again from scratch होगा and that's why I hear you जो बोल रहे We Talk Football and let's be honest yes बहुत ट्रोल करते हैं I know वापस से वीकेंड में हारे थे गुरुजी but PSG 2 years back we forget 2 years नहीं 3 years back they were in the finals मतलब as football fans do we read it too much into it or is it would you blame Galtier मतलब was Galtier at fault the way क्योंकि I don't think you can fault one or two players यार when no I don't think like I don't know, man. When I'm looking at PSG and if I have to differentiate this team from the team that played under Poch, right? And people were very impressed with Galtier in the beginning. So almost you can compare it to a general job, right? When you start heading a new team of people at a job, right? And those team of people, even if they are absolute superstars at their jobs, they will look up to you and think that okay, fine, we can learn something. They will do. They will start following the instructions of you as a team leader for the first 1 or 2 months, for the next 2 to 3 months. But after that, they will start thinking, ki, bhai,
अभी मैं ना, अगर मुझको पूरी दूसरे कंपनी या क्लाइंट्स अगर ऐसे सब मुझे ऑलरेडी अच्छा बोल रहे हैं कि मैं अच्छा हूँ, तो मैं अपने से करना भी शुरू कर सकता हूँ। ठीक है, तो why do I need to listen to people and all of that stuff, right? Those thoughts start creeping in. I'm not saying they have started doing it, but those thoughts start creeping in. And when those thoughts start creeping in, it affects team chemistry. And when I'm looking at PSG, there is a lack of team chemistry currently. Okay, when I'm looking at PSG, there's a brilliantly massive lack of chemistry when you compare it to the first few games under Galtier, right? So I think that is something that has hampered them. It's PSG as an institution currently. As an institution right now, they have so many superstars in their team. How do they manage them? Which manager manages them to get the optimum out of them on a very consistent basis for 6 to 7 months? That टुकिल, जैसे दीपक बोल रहे कि वो है, मेरे लिए अभी भी एक ही नाम है, वो है जिनेडीन जिडान. I'll still stick to हाँ, that. Zidane actually Uh, makes sense culturally भी बोल दो, मतलब he हाँ, actually kind of makes sense. I'll stick to that. अब आप बोल रहे हैं, एडिथ बोल रहे हैं, इवन जॉनसन बोल रहे हैं, मिडफील्ड इज नॉन एग्जिस्टेंट. पीएसजी midfield doesn't even exist, guys. If you look at the names in midfield, they are massive names. There are Marco Verratti, Fabian Ruiz, best midfielder of Napoli, and Napoli now तो कहा जा रहा है, ठीक है. Mm-hmm. तो you looking at these names are not halke names, but we still need to understand why they are not playing well, because they are not linking up well with the people around them. Why they aren't linking up well with people around them? Because people around them also want to just prove their worth. When you want to prove your worth, sometimes you stop thinking about your teammates, and Right. that is a normal human psychology. That is absolutely fine. But when it starts impacting the whole team or the whole institution as a whole, then you start thinking that okay, fine, there is something wrong. And that is what we are seeing currently in front of us. इसलिए इस टीम को मैनेज करने के लिए एक मेंटालिटी मॉन्स्टर मैनेजर भी चाहिए रहेगा. ठीक है, तो एक मेंटालिटी मॉन्स्टर मैनेजर मेरे लिए तो जिनेडिन जिडान ही है. आई थिंक जिडान एक ऐसा बंदा है ना, मतलब अगेन मैंने गोट स्ट्रीम किया था, मतलब फॉर मी जिडान इज देन दैट गोट कैटेगरी. और अगेन गुरुजी इज अ ह्यूज फैन ऑफ जिडान, आई एम एज वेल. मतलब फॉर मी देयर आर वेरी फ्यू मैनेजर्स अभी ना, मतलब आई नो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द बेस्ट मैनेजर्स जो टैक्टिकली किए हैं, जिन्होंने बहुत सारा जीता है, but Zidane kind of commands respect by himself. You know, that kind of guy that I feel that maybe PSG needs someone like that. Jo, they don't need any person to tell them like every match, like you know, when Zidane is at the भाई आप sidelines में आप basically you know a Messi kind of you know or Mbappe or maybe even a Neymar would probably be respectful from minute 1 to minute 90. That's what I'm assuming. Nothing against Galtier or anyone यहाँ. लेकिन again Tuchel the way he left PSG that is one story that we cannot forget as well. लेकिन हाँ we'll come to Chelsea Putin, that's really वो तो बात करना ही है. But I think just और एक भी चीज आई थिंक इसी ने ही बोली थी, किसने तो बोली थी, कंफ्यूज्ड दिल कंफ्यूज्ड दिल ने बोली थी, फैबियन वाज प्लेड एज एलएम वेयर ही वाज स्ट्रगलिंग, पुअर टैक्टिक्स, ये वाला बोला था. एंड आई एग्री, ये वाला मैच ही मैंने देखा था कि Fabian was played as an LM there, but when you're looking at options at LM as well, you don't find too many options at LM as well, to be very honest with you. So even if we take Fabian out of the picture, right, when you're looking at the center midfield, we have Verratti, Vitinha, Soler. These three are good names, man. These three are good names. And even if I'm looking at Renato Sanchez, they are good names. When he plays, he's really मतलब he hardly has a poor game. When problem is injuries. When he is brought on, he hardly has a poor game. So these are good names. So when I'm talking about this, so how do you make these players function cohesively? That answer should, वो आंसर एक प्रॉपर, जैसे तूने बोला ना, अब का मैनेजर हु कमांड्स रिस्पेक्ट, वो मैनेजर ही दे पाएगा टू दिस लॉकर रूम राइट नाउ. After so many case studies at PSG, right? Tuchel, Pochettino, so many case studies at PSG. I think it's time for the institution to realize that भाई अब तो जो मैनेजर लेके आना है, एक एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग पूरा वर्ल्ड रिकॉर्ड ट्रांसफर फी टाइप जोन ऐसा मैनेजर लेके आना है. Yeah, because they've got low ball with Galtier, or if that's not working, then क्योंकि Ancelotti भी रहा है, people forget that Ancelotti has also been a PSG manager. अब वो भी नहीं कर सका, that when that level we're talking is exactly probably more than the Zidane, personnel, more than buying people,
they need to think about hiring the best manager possible currently. ठीक है, who can just handle the egos in this locker room. एंड That जस्ट कीप देम, is, क्योंकि अगर yeah, मैनेजर अगर yeah. सही नहीं रहा, टू बी ऑनेस्ट, मेसी, एम्बापे एंड नेमार, टू बी ऑनेस्ट एटलीस्ट एम्बापे और मेसी, तो मुझे लगता है everyone is saying they should leave. Again, we talk football, big up to yaar, big shout out again to we talk football. We check him out absolutely on YouTube yaar. Again, tagged below. I think owner is the root problem. He stays, PSG fails बोल रहे. हाँ मतलब a lot of off field controversies going on, हमें पता ही है वो. आई थिंक अभी आपसे ही डिस्कस किया था, मैंने एक वीडियो किया था भाई अभी के साथ वी टॉक फुटबॉल पे, तो आप चेकआउट कर सकते हो. और उसके बारे में हमने बात किया था, तो कहीं ना कहीं जो ऑफ पिच इश्यूज है ना, पीएसजी, देखो वी ऑल नो दैट फ्रांस फुटबॉल, पीएसजी, दीज आर लाइक मतलब ब्रांडिंग जो बोलते हैं ना, दैट इज व्हाट इट्स ऑल अबाउट, एंड एट द एंड ऑफ द डे इट गोज ओवरबोर्ड फॉर देम. एंड दैट इज व्हाई आई थिंक an owner who thinks football is probably needed for them more. But at this point in time, let's be honest, Abhi, with all due respect, अगर वो ओनर भाई, whatever you have got, I know PSG had a Polita, they had a Ronaldinho, लेकिन ये ओनर से basically they have got to the level that they have been able to get all these players. So I don't think that is anywhere close to possible unless legal problems हो जो चल रहे हैं. I know that those talks going, but I think you have a point. Being a PSG fan, I can relate to you absolutely. कोई एक विंडो में जाने दिया, बिल्कुल. आई थिंक दैट्स अ गुड पॉइंट. डी मरिया, परेडस, आई थिंक कहीं ना कहीं एक साथ बहुत चेंजेस हो गए. दैट मे बी अ क्वेश्चन मार्क, बट अगेन टू बी ऑनेस्ट आई कैन सी दैट इतना बुरा नहीं जितना पीपल थिंक इट इज. बट लेट्स सी इफ मेसी स्टेज दैट. बट लेट्स मूव ऑन टू, वी हैव स्पोकन अबाउट रियल मैड्रिड, बार्सा, पीएसजी. थोड़ा कमिंग बैक टू ला लीगा फॉर अ सेकंड भाई, जस्ट टू लेट यू ऑल नो, यहाँ मैंने एक कमेंट देखा था, डिएगो सिमियोने टू पीएसजी हो जाए, और चेल्सी के साथ भी काइंड ऑफ पीपल आर सेइंग व्हाई नॉट टू चेल्सी. वो बात की बात है, अभी के लिए तो भाई पॉटर है अभी के लिए जस्ट अबाउट. लेकिन डिएगो सिमियोने, मतलब आप अगर देखो ना ला लीगा टेबल, so he's like what, 5 points all of a sudden. Atletico Madrid is 5 points behind Real Madrid and they are getting wins, and Depay and Griezmann are actually balling, bro. I don't know आपने देखा वीकेंड में, that was actually good, and Morata as a substitute कुछ ना कुछ कर रहा है. तो and Diego Simeone is seeming like he's happy again at Atletico Madrid. So do you see that change happening? क्योंकि I think that is a giant which is sleeping. Atletico Madrid needs to do better. We all know that Joao Felix wasn't used rightly, right? तो क्या लगता है, मतलब कैन दे डू सम सरप्राइज नेक्स्ट सीजन, और यू आर सेइंग कि नहीं, डिएगो सिमेने नीड्स टू मूव फ्रॉम एटलेटिको मैड्रिड? No, Simeone is synonymous to Atletico Madrid. भाई आप एटलेटिको मैड्रिड का मतलब लेजेंड जीन नहीं निकाल सकते यार. मतलब लाइक सिमियोनी, इट्स करंटली जैसे आप बोल सकते हो कि Guardiola is synonymous to City, Klopp is synonymous to Liverpool currently, because it's just how they play. It's just how they play. It's like them. Like as I said, a footballing gene जो होती है ना, ये ईरा की जो हर एक टीम की एक फुटबॉलिंग जीन है. हमारा फुटबॉलिंग जीन तो हमें समझ में ही नहीं आ रहा है कि कौन क्या है. ठीक है, पर ये टीम्स की बन गई है, सॉलिडिफाई हो गई है प्रॉपर. ठीक है, तो आई डोंट थिंक सो दैट सिमियोनी शुड लीव एटलेटिको. फेयर इनफ, नहीं फेयर इनफ. चलो देखते हैं भाई, एनीवे व्हाट हैपेंस. मैं तो चाहता हूँ एज अ फॉर ला लीगा, मैं तो न्यूट्रल वॉचर हूँ गुरुजी. सो आई ऑलवेज वांट एटलेटिको मैड्रिड टू काइंड ऑफ कम बैक, जो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा. बट अगेन टॉकिंग अबाउट इंटरेस्टिंग लीग्स ब्रो, मतलब यहाँ तो आई डोंट नो व्हाट टू से. सो एक्स बायर्न म्यूनिख, एंड आई थिंक वो बायर लेवरकुसेन में भी था क्या, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग पहले, बट एज अ प्लेयर, बट बेसिकली जावी अलोंसो गेटिंग द बेटर ऑफ बायर्न म्यूनिख, एंड ऑल ऑफ अ सडन डॉर्टमुंड, जिनको हमने बाहर निकाला चैंपियंस लीग से, बुंडेसलीगा, they might have a chance, bro. As what are you saying in the Bundesliga again? मतलब for years हम देखे Bayern Munich has been dominating, but now what is your call? सब लोग in the chat do let me know as well. I think Dortmund do have a good shout, and if you look at their fixtures as well, एक बार अगर fixtures पे Dortmund के fixtures और Bayern के fixtures भी दिखा दें, ठीक है, तो if you look at both of their fixtures as well, I know it's बैलेंस पे हैं दोनों के. मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा because I feel we should talk about Chelsea soon. ठीक है, बट ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा. बट this Bundesliga race seems so refreshing because finally it's not a one horse race anymore too much. ठीक है, ऐसा बायर्न ऐसे like भाग के लेके नहीं जाएगी. ठीक है. There is a serious contender in Borussia Dortmund this time out. I'm not saying they weren't serious in the past few seasons, but this time it's damn close, and I really feel that I think Dortmund can take this.
बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, बाय द वे यहाँ पर श्रेय को शाउट आउट है भाई, बिल्कुल श्रेय एफसी भाई, पीपल टू चेक आउट। मी एंड श्रेय विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल आज रात को 10:30 बजे, सो वहाँ पर भी डेफिनेटली ज्वाइन करना। अगेन भाई पीपल, करीबन 250 लोग देख रहे हैं। एवरीवन, आई रिक्वेस्ट ईच एंड एवरीवन टू हिट दैट लाइक बटन। मैं देख रहा हूँ लाइक्स काफी कम हुए। लाइक्स इज लाइक कैसे बोलूं भाई, मतलब कम ऑन, एज अ चेल्सी फैन वी नो दैट ज्यादा गोल्स आते हैं तो भाई कॉन्फिडेंस आता है, तो ज्यादा लाइक्स आता है, यूट्यूब अपने आप बताता है भाई कॉन्फिडेंस दे इस चैनल को भी। और अगेन एवरीवन लाइकिंग द स्ट्रीम, hit that subscribe button on Adidev Guruji, Shrey FC, Almighty Sports Plus, Almighty Blues FC, We Talk Football, 8744 and Chelsea Perspective. Come on, sub linked hai below. I got much needed belief as a City fan seeing Leverkusen win. इसी पर आ रहा था absolutely मानव। We all know that Champions League जो टाई है, इस पर आ रहा हूँ धीरे धीरे। I'm coming to the EPL clubs for sure. No, Man City Bayern. Nagelsmann देखो, मतलब अगेन वी स्पोक अबाउट अप एंड डाउन, मतलब फॉर अ कपल ऑफ टीम्स, रियल मैड्रिड का हो गया, मतलब डू यू थिंक लाइक रियल मैड्रिड, बायर्न म्यूनिख इज अ साइड जहां पर व्हेन दे वांट वो अप कर सकते हैं गियर, मतलब दे हैव अ, मतलब आर्गुअबली वन ऑफ द बेटर स्क्वाड्स नहीं यूरोप, मतलब इन दिस पर्टिकुलर लॉस अगेंस्ट लेवरकुसेन, और जनरली जैसे मॉन्चेनग्लाडबाख ऑलवेज हैव अ नंबर ओवर बायर्न म्यूनिख, मैन सिटी हु आर क्रेजीली, मतलब एकदम हालैंड सिटी हो रही है भाई, क्या ही तो बोलूं। So, do you think with Pep also knowing what Bayern is all about, do you see that nahi, there is a particular way of beating Bayern Munich? And what is your opinion about a Man City Bayern Munich tie यार? सुनना चाहूंगा आपसे। It would be massive in terms of a very what do you say, both have a extremely free flowing attitude about them, and both like to go on the counter a lot, right? uh, आप पोजेशन फुटबॉल देखोगे, आप पोजेशन फुटबॉल, यस, मैन सिटी डू लाइक टू प्ले दैट पोजेशन बेस्ड फुटबॉल, बट ऑब्वियसली आप जब बायर्न का भी अगर आप डिफेंस देखोगे, दे डू लाइक टू fairly keep their defensive line in a slightly higher zone than a mid block. I'm not saying completely high block as well, as slightly higher zone than a mid block, mid to high block आप बोल सकते हो। So वो वाले zone पे आप जब आप genuinely Man City को भी hurt कर सकते हो when you have that kind of a defensive line against City, and City can hurt you if you have that kind of a defensive line against them, right? So that ये दोनों की एक जेन्युइन एक हैबिट मैं देख रहा हूँ इस सीजन है, एंड ये डिफेंसिव लाइन की वजह से बायर्न म्यूनिख ने भी बहुत सारे अटैकिंग ट्रांजिशन से बहुत सारे काउंटर अटैकिंग मूवमेंट्स उन्होंने कंसीड किए हैं, तो वो एंड दे आर रिलाइंग ऑन द पेस ऑफ लेट्स से लाइक Upamecano and Davis, for example, right, to cover up when they are on the counter, when they're suffering a counter, right? So they are relying on the skills of these individual personnels to cover up for any system के deficiencies most of the time in this season, and वो हम देख रहे हैं, because obviously ठीक है, मतलब that's a fair way to go about it because their players are immensely talented, but now they are facing a super machine in terms of Man City, and Man City have a very weird habit of not performing when it's most expected of them to, right? तो when नहीं सबसे वही, ज्यादा आई थिंक दैट इज द ओनली रीजन व्हाई दे, आई थिंक मेन रीजन वही है। हालैंड ऑब्वियसली ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स, लेकिन हालैंड का जो मेंटालिटी है ना, मतलब उस मोमेंट में आई थिंक हालैंड इज लाइक नहीं मुझे करना है, मतलब अभी भी फॉर पीपल सेइंग दैट मैन सिटी डोंट परफॉर्म एट टाइम्स बिकॉज़ ऑफ हालैंड, भाई आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, भाई 42 गोल्स और समथिंग, उफ। right, right, हम कितना 50 मिलियन ज्यादा नहीं दे पा रहे थे हम एट दैट टाइम, बिकॉज वी वांटेड अ सर्टेन लुकाकू, एंड यू नो इंटर यूवे के हाँ, बारे हाँ, में थोड़ा सा बात करना टुवर्ड्स द एंड। बट अगेन मैन सिटी भाई, अगेन एफए कप में वी ऑल नो दैट भाई, मानव एंड एवरी ऑल द सिटी फैंस यहाँ पर शाउट आउट है, लेकिन वी ऑल नो दैट यू अलोंग इन मैनचेस्टर यूनाइटेड आर वन ऑफ द फेवरेट्स। लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड भी आई नो कहीं ना कहीं विलियन नेक्स्ट चेल्सी फैन कैन हैव हेल्प देम विद दैट रेड कार्ड जो मिला, लेकिन क्रेजी मोमेंट गुरुजी, आई डोंट नो इफ यू वॉच्ड, 1 मिनट में भाई मार्को सिल्वा को रेड कार्ड मिला, फिर बेसिकली विलियन हैंडबॉल हुआ था, and at the same time you had this guy, of course, Mitrovic doing what he did, referee पर हाथ उठाया, all that, I know it's crazy bro, people are saying 10 game ban मिल सकता है, it's absolutely मतलब I don't know, मतलब that's absolutely I don't know, but Eric Ten Hag might win 3 trophies यार, मतलब yeah, Guruji, how yeah. do I you feel mean, about it? yeah. Nobody would have expected that to happen at the start of the season, and because after that Brighton and Brentford results, people were like, "भाई Eric Ten Hag भी Ragnick जैसा निकला," and all of that. But आप देखोगे कि भाई Ten Hag ने भी भाई phases के थ्रू अपनी टीम को लेके गया है, मतलब उसके नेक्स्ट फेज में वो एक ऐसा टैक्टिक खेलने लगा जो
थोड़ा सा लिटिल मोर कंफर्टेबल था फॉर द मैकफ्रेड कॉम्बिनेशन, राइट? एंड वो मैकफ्रेड कॉम्बिनेशन के साथ थोड़ा सा लिटिल बिट मोर डायरेक्ट खेलने लगा. ही स्टार्टेड to tell them to not stick by his own rules, and but the only person who was sticking to his own rules was David De Gea, who was still distributing from the back for from throughout his campaign, right? But after that certain phase, second phase के बाद, वो second phase में लेकिन ट्रेनिंग में भी लेकिन उनको बता रहा था कि ठीक है ये मेरा सिस्टम ऐसा है, हम ये प्लान भी रखेंगे. प्लान बी उनको ट्रेन कराता रहा. एंड नाउ you see that plan B is the plan A that he has for almost every game, and that plan A is just those intricate passing, opening up those intricate passing lanes, unleashing Rashford on the left, unleashing those runners on both wings, to be honest, because they have a lot of players who like to be very direct in terms of running. So unleashing those runners while playing those small passing patterns and being involved in those small passing patterns, involving Casemiro, bringing Casemiro into the mix, because bringing Casemiro into the mix has been amazing. I don't think Yep. so. इस गेम में Casemiro नहीं खेला था ना, if I'm नहीं not तो wrong. कैसेमिरो भी 4 मैच के लिए सस्पेंडेड है ना, इंक्लूडिंग दिस इस वन. गेम में नहीं अच्छा, खेला था. ये इसलिए दिखा रहा हूँ हाँ, गुरुजी. तो द थिंग इज, ब्रूनो फर्नांडिस ने एक पुश किया था लाइंसमैन को ड्यूरिंग द लिवरपूल गेम, ठीक है, right, और right. मित्रोविच ने किया. तो यहाँ पर अगेन जो न्यूट्रल मीडिया है वो लोग बोल रहे हैं भाई इट्स डबल स्टैंडर्ड, बट देयर इज अ लॉट ऑफ से इंग्लिश मीडिया वाज सेइंग कि नहीं नहीं, मित्रोविच डिजर्व्स अ 10 गेम बैन. आई डोंट नो, आई वुड लाइक टू नो योर ओपिनियन यार. मतलब इज इट द सेम थिंग, पीछे से पुश करना एंड मित्रोविच ऐसे ऐसे करना? अपने को आई डोंट थिंक इज द सेम थिंग, हैविंग प्लेड फुटबॉल. मतलब मित्रोविच It's not. एक्चुअली लॉस्ट इट, सच में बोले तो. नहीं, Mitrovic loses it a lot a regularly, lot. so 6 रेड I कार्ड्स lose गुरुजी, 6 रेड कार्ड uh, डायरेक्ट उसको मिला है. loses वाओ. it a lot regularly, so I'm not surprised. हमारे पुराने प्लेयर विलियन को भी तो रेड कार्ड मिला. और वही हाँ. सेम फेज में 3 लोगों को रेड कार्ड मिल गया भाई, मार्को सिल्वा, विलियन और मिट्रोविच. That was a crazy phase. But yeah, after they are 2 men down, I think it was game set and match for Yeah. United. Absolutely. भाई चलो भाई, we have to speak about Chelsea. We all have been waiting यार. मतलब मैं थोड़ा सा to be honest गुरुजी, मैं that's why I was kind of avoiding, क्योंकि कितना रोना करना है भाई, रोज रोज. मतलब 3 हफ्तों के लिए नहीं था. And we are back to uh, it. We are uh, back to it गुरुजी. we are But I back to would, it. एक मैं आई नो, मतलब थोड़ा सा चेल्सी एवर्टन में 48 आवर्स हो गए अभी. थोड़ा सा अभी we have kind of थोड़ा सा मतलब absorbed things. I would like to ask you गुरुजी, मतलब I know that कहीं ना कहीं टॉड बर्ली एंड को भी at fault है, इतने सारे players लाके दे दिए, it's not easy to manage. And I know football, we are slightly playing better football. I don't think we can argue in the last 3 weeks, not still convincing, nowhere close to like a Man City or Manchester United अभी. लेकिन why do you think this guy is not using him? मतलब even at the weekend यार, आपने देखा था भाई with Hasselbank the match. Please tell me the moment, मतलब इवन अ रनियरी, आई रिमेंबर भाई, इवन अ जोसे मोरिंग दैट मोमेंट, आप जब 2 फॉरवर्ड्स को ला रहे हो, आप एक डिफेंडर लाओगे, एक विद पेस लाओगे ना, क्योंकि आपका हाँ, ऑपोजिशन विल हाँ, गो फॉर हाँ. इट एंड दैट विल क्रिएट द स्पेस. मतलब Right. Madueke has a strength even more than RLC. I would like to argue RLC is good. We love RLC. भाई Guruji and me have spoken so much about RLC. And Chukwuemeka, yes, जब लाना था तब तो लाया नहीं, और फिर वो he is Hmm. coming now. Is it debatable that It Mudryk is very and debatable. Madueke are not in his plans? It is very debatable. I mean, I'm just getting, especially for the person on the right. Okay, Hmm. I'm just getting more and more irritated with the fact that he's not in the starting 11 on a consistent basis. I'm just getting एग्जैक्टली, कॉन्फिडेंस irritated. और भी नीचे जा रहा है ना, और भी और बंदा भी नीचे ओवर जा रहा है उसका, और भी जेलस नीचे हो जा रहा रहा है. आपने इफ यू पेड द बिग बक्स फॉर हिम, ठीक है, आप बोल रहे हो कि ही शुड ट्रेन एंड ही शुड डिजर्व डिजर्व अ प्लेस इन द फर्स्ट टीम, बट लेट्स फेस इट. आर यू सेइंग स्टर्लिंग डिजर्व्स अ प्लेस इन द फर्स्ट टीम? ठीक है. Are you saying Kai Havertz deserves a place in the first team? I'm not है. saying these are देखो, bad यू कैन players or टेक्निकली these से are. दैट काई हावर्ट्स हैज स्कोर्ड 3 गोल्स इन 3, लेकिन मतलब टू जस्ट टू आंसर दैट, मुझे लगता है स्टर्लिंग द ओनली रीजन मेरे ख्याल से दैट व्हेन फिट ही इज काइंड ऑफ पिक्ड इज बिकॉज अमंग ऑल एक थोड़ा कॉन्फिडेंस था कि भाई ये ही इज बिन दैट डन दैट, ही स्कोर्ड द गोल्स और हमें चाहिए गोल्स अभी. बट आई डोंट एग्री विद द टैक्टिक, क्योंकि जैसे वी प्ले स्टर्लिंग एंड हाउ ही इज यूज्ड एट मैन सिटी वाज टोटली Yeah, डिफरेंट. yeah, it's हैवर्ट्स totally द हाइट different. फैक्टर कोई है ही नहीं हाइट हाँ, के लिए. हाँ, मतलब but bro, what I'm trying to tell you is, okay, ठीक है, even if that's height factor is there, ठीक है, Kai Havertz is there. Sterling
is हाँ 2 पेन जैसे तहा ने बोला 2 पेन्स इज स्टर्लिंग सॉरी हैवर्ट्स का जोन उधर आ गया ठीक है अभी मैं स्टर्लिंग के बारे में बात करूंगा नाउ स्टर्लिंग के बारे स्टर्लिंग what are the kind of performances that he has delivered recently? I think one or two of those performances were pretty good, but do they warrant a place for him every time in the first team? Almost every time in the first team, because correct me if I'm wrong, he's almost starting every game, right? So does that warrant a place for? I don't think so. Yeah, Give when fit, Mudryk- I think it is Felix, Havertz, and Sterling. That's what I understand. Exactly, Potter. exactly. When fit, it's Felix, Havertz, Sterling. Felix is undroppable. Enzo is undroppable. And That is understandable for भाई everyone. Enzo लेकिन सेस फैब्रिगास के याद दिला रहे यार seriously man, the guy is superb. Absolutely. It's everyone. So if you have Enzo who has the ability for those diagonal balls, who has the ability for those weighted through passes, who has that ability, why are you not regularly starting Mudryk then? Try to build a chemistry between Mudryk and Enzo. It kind of reminds me, if I can take a Liverpool analogy, it could be like a Torres Gerrard partnership, right? I'm saying Torres was the center forward at that point of time, but I'm just talking from the chemistry perspective. Torres, the pace that Torres had, the The in burst of behind runs, pace. the एकदम. burst of pace that Torres had, the Yeah. in behind runs that he used to, that the in behind runs that he used to make, kind of, what do you say, the kind of understanding that he had with Gerrard. Okay, fine, this is the time then that I have to accelerate, right? And the kind of weight that Gerrard used to actually put on the pass, those were that is the chemistry that I'm talking about, right? That is the chemistry that I feel with Enzo and Mudryk, that is very much there, bhai. But why वो get in isn't behind. the वैसे ही हमने वर्नर को यूज नहीं किया था, याद है गुरुजी? हाँ, मतलब for हाँ, me that was very debatable. Warner used to make all the runs. उस समय हमारे पास एंजो जैसा प्लेयर नहीं था. अब हाँ. बेसिकली मुड्रिक है लेकिन उसको यूज नहीं किया जा रहा है. मतलब आई 100% agree with that. मतलब It is as much as absolutely मैं बोला हूँ, baffling. And हाँ, आप और एक चीज भी देख रहे हो कि आप मुद्रिक के परफॉर्मेंस को बीच में उसको सेंटर फॉरवर्ड खिलाया, ठीक है, एक मैच के लिए exactly. उसको बीच में सेंटर हाँ, फॉरवर्ड. and he हाउ got an यू assist जजिंग दैट finally. परफॉर्मेंस? हाउ यू इवन, मतलब ठीक है यार, आप इवन उसको बोलो नहीं यार मुद्रिक थोड़ा असिस्ट भी लाया, बट ही वाज एवरेज. मतलब Yeah, you you can't can't judge that. judge him. You can't judge him Exactly. in that position. You can't. It's not his position. You can't judge वो him. शाख्तार में भी नहीं खेला है सेंटर फॉरवर्ड. हाँ, मतलब for people, you can't मतलब judge him. from whatever I've seen, I don't remember him. What is this habit that we have of playing players, good players, out of position? ठीक है. It's a Chelsea thing, you know that It's a very well. Chelsea thing, bro. Good players and like mega money signings out of position. मतलब ये बिल्कुल. क्या है, नहीं समझ पा रहा है भाई मुझे. This is a habit that we have formed at Chelsea in the past 2 to 3 years. Habit. This is literally a habit. Yep, And I yep. was not But surprised, bro. This Everton result, seeing that game, I was reliving Lampard days. I was I was reliving Lampard days. I was reliving Tuchel days. अरे Like, लिटरली अरे वो वाह. याद है वो जो डोमिनिक कैल्वर्ट लुइन ने एक पेनल्टी मारी थी, वो वाला मैच था ना, लैम्पार्ड हाँ, गॉट द सैक. जस्ट बिफोर हाँ. दैट आई थिंक ये एक मैच था जहां पर वी डोमिनेटेड, बट देन मेंडी गेव अवे Concentration पेनल्टी. levels, bro. I'm just हाँ, talking about concentration levels. In both these managerial stints, we have had certain games, a good amount of games, where the concentration levels have dipped, and we have not been able to hold on to a lead. We were leading twice in this game, if I'm not एग्जैक्टली. wrong. ठीक है. और वहीं We पर were भाई not मतलब able आई to नो hold on. मैं आना नहीं चाहता था मिस्टेक्स पर येट अगेन, क्योंकि उसके बारे में मैं भाई 4 बजे सुबह तक मैं बात करता हूँ उस दिन. मैं पागल हो गया था. आई लॉस्ट इट गुरुजी. आई डोंट नो इफ यू हैड अ चांस टू वॉच माय स्ट्रीम. आई टोटली लॉस्ट इट अरे एट ब्रो, दैट I टाइम. was I was watching the screening, no, Oh yeah, you Hasselbank were वाला there. zone. भाई I हाँ. totally lost it. I'm like no bro, as in मैं जितना ज्यादा सेलिब्रेट किया था ना with us kind of coming back and getting the lead twice, but उतना ही basically again with all due respect, again मैं comments पर आ रहा हूँ. Just give me a second people, again do not forget to hit the like button. By this guy मतलब again तीन one step ahead, two steps back वाला चीज है. मतलब with अरे Thiago Silva not ये being there. आदमी क्या आदमी है यार. ये आदमी, मतलब when I was just praising him before the Everton game. Like I was Exactly. just praising him before the Everton game. I was talking to people around like Kalidou Koulibaly, Benoit Badiashile, and Wesley Fofana. These three are a partnership. I don't think so Cucurella will play left centre back because Burnley will sit back. It's a Sean Dyche team. Burnley will sit back. They will play for set pieces, and we need tall centre backs to win the
first balls. So I don't think so left center back पे कुकुरेला खेलेगा. As much as I love his ball progression skills, वो नहीं खेलेगा left center back पे, and वही हुआ. Left center back पे बाडेशील खेला. मुझे लगा ये तीन मस्त खेलेंगे. एंड फिर ये बंदे की इतनी एक बहुत बुरी आदत है, वापस वापस सेकंड गोल के लिए कमिटेड वेरी अर्ली. ठीक है, एंड ही गॉट स्पन लाइक अ टॉप. ही ऑलवेज गेट्स स्पन लाइक अ टॉप एंड रिकवर ही नहीं कर पाता है उससे. इट्स you have Thiago Silva as a role model in the same fucking locker room. Thiago Silva, when on a counter attack, please don't, I think we have noticed this, on a counter attack Thiago Silva holds his position. Yep. Thiago Silva holds his position more That is often a safety than not. valve in itself. You have to hold your position. मतलब Yeah. आप ये क्यों सोच रहे हो कि चालोबा ने अपना काम नहीं किया? आप अपना काम करो भाई. आप अपना काम करो. That's what I'm saying. मतलब why is he overthinking? He's almost like the David Luiz of Arsenal, you know. मतलब he reminds me of David Luiz of Arsenal. हाँ, जब David, Arsenal में चल गया था. exactly सही बोल रहा है. मतलब he has very good moments as well. I'm not going to pin him again. हाँ. Kepa, यार, you have to question Kepa in that moment. But भाई ये before going, I know I'm coming to other clubs as well. लेकिन before going, I want your opinion last on this year, गुरुजी Mount वाला यार. बहुत सेंसिटिव मामला है ये. आई नो दैट दिस इज लाइक समथिंग दैट मैं तो काफी मतलब इमोशनल हो गया, ट्वीट कर दिया, कुछ भी कर दिया, साला कुछ भी काम नहीं कर रहा. मतलब आई नो वी वांट हिम टू कीप बी हियर, लेकिन ही इज नॉट बीन अग्रीइंग. बट अभी यार हिज डैड इज नाउ द मेन एजेंट विद हिम, यू नो, टॉकिंग टू अनदर न्यू एजेंट. तो मैनचेस्टर एंड लिवरपूल लिंक्स कमिंग अगेन. लेकिन व्हाट डू यू थिंक यार, इतना हेट क्यों मिल रहा है माउंट को, इवन फ्रॉम चेल्सी फैन बेस? यस, ही हैज हैड अ वेरी वेरी पुअर सीजन, आई एग्री. लेकिन कहीं ना कहीं आर वी गोइंग टू बी अगेन रिग्रेटिंग द फैक्ट दैट दिस इज अ पोटेंशियल, नॉट राइट नाउ इन द स्टार्टिंग लेवल, लेकिन is he not good enough to even Hudson Odoi को इतना पैसे दे सकते हैं? तो why not Mount? I'm just questioning that. I discussed the same thing with a fan at the screening कि if he's looking at other Cobham products around him, right? Hudson Odoi. If he's looking at Hudson Odoi, he's at Bayer Leverkusen. I think we are paying a good share of money of his wages, not Bayer Leverkusen, right? Yeah. We are paying a good share of money for Callum Hudson-Odoi. So if he's seeing all of that, he's an employee of an organization. He is bound to say the fact that भाई मुझे उतने पैसे मिलने चाहिए. It's very valid. मतलब दो बार बैक टू बैक प्लेयर ऑफ द ईयर बना है भाई हमारा. मतलब इतना आसानी से कैसे भूल, वो भी कौन से 2 साल? मतलब you would argue in the last decade, two of the those two were the most difficult years for us. Exactly. I can't believe it. difficult years for us. और भाई मतलब हम लोग सब सोच रहे हैं, फैंस जो ट्विटर पे ना, कि भाई चलो गैरेथ साउथगेट माइट बी एन इडियट, बट हिम, पॉटर, टुकल और भाई कितने भी लैम्पार्ड, सब लोग बेवकूफ है क्या कि भाई माउंट को यूज किए? I'm just thinking, don't they know football? I'm just wondering what's wrong. नहीं समझ पा रहा है, मुझको समझ में नहीं आ रहा है भाई वो चीज, क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ कि आपने कैलम हडसन-ओडोई को इतना ज्यादा पे कर दिया बिकॉज बीच में बायर्न म्यूनिख आया था उसके लिए, आपने बायर्न म्यूनिख को भगाने के लिए कैलम हडसन-ओडोई का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल कर दिया, और अब मैनचेस्टर यूनाइटेड को दे दोगे यहाँ पर, ब्लास्ट पे कर दिया भाई. अब ऑब्वियसली अब तुमको भुगतना ही पड़ेगा ना. नाउ ब्रो, कैलम हडसन-ओडोई इज नॉट better than Mason Mount. Let's just face it. He's not better than Mason Mount. Yeah, potential था at best यार. मतलब Mason Mount has done that. Right now he's done it, bro. मतलब he's proved his mettle. भाई Real Madrid in the Champions League 2021, me and Guruji watched the match together. I remember. भाई याद है Mount का performance against Real Madrid? Mount and Pulisic had that night, crazy night. What Ramos and Courtois became on that night. भाई चैंपियंस लीग विनिंग असिस्ट. भाई अगर तुम काया हावर्ट्स के बारे में बार-बार बोल रहे हो कि काया हावर्ट्स आपको चैंपियंस लीग टाइटल जिताया, ये किया, चैंपियंस, दैट इज अ ह्यूज सपोर्ट दैट पीपल डू हैव फॉर काया हावर्ट्स एंड आई एम फाइन विद इट. दैट इज ट्रू, बट who the fuck provided the assist also? Please remember. Yeah, मतलब there are at least 10-15 extremely important moments यार. यहीं पर देखो, मनी हो या लेंथ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, मैं बोलता हूँ जो भी हो, डोंट लेट हिम गो इन हरी. सिंपल एज दैट. आपको अगर एल लेना है तो ले लो भाई. आप लुकाकू को दे सकते हो 100 million इन द ट्रांसफर. यहाँ पर मेसन माउंट, समवन हु इज वन ऑफ आवर ओन, भाई 7 साल के एज से ही भाई he made us believe in Cobham, to be very honest. I'm not even exaggerating this. Him and Reece James, two people made me really believe in Cobham, and this is at a time when I'll revisit this lineup again that we had against
Manchester United when Lampard के first game में against Manchester United, that lineup, and then the next game was a first Premier League game if I'm not wrong, क्या डर right? लगा था ना वो फर्स्ट गेम में भाई के बाद. भाई वो एग्जैक्टली. लाइनअप मैं जब देख रहा था, मैं बोला ये लोग कौन है ये हम लोग लोग कौन है बॉटम हाफ में होने वाले, मैं तो सोच लिया था उस ये सेकंड के लोग लिए. कौन है. But हम्म. now after from those batch of players, there were a certain batch of players who just took the chance, took the opportunity like fish to water, right? And uske baad they just started continuing those performances, and Reece James and Mason Mount were one of them, were two of the front runners in that zone of. How can people even forget that? लोग बोल रहे थे कि भाई कॉबम से कोई आ नहीं रहा है टीम में, कॉबम से कोई आ नहीं रहा है टीम में, कॉबम से कोई आ नहीं रहा है टीम में. अब जब कॉबम से कोई आ रहा है टीम में, फिर बोल रहे कि नहीं वो परफॉर्म नहीं कर रहा है, 1 साल हो गया परफॉर्म नहीं कर रहा है, 1.5 साल हो गया परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो उसको हमने रखा क्यों है. अरे भाई अभी आया है ठीक है, अभी आया है, दो बार प्लेयर ऑफ द ईयर कैंपेन जीत चुका है, ठीक है, ही हैज हैड वन लीन सीजन, ठीक है. Don't count him out just because of one lean season. It's not right. It's not right. I think he deserves more patience from us. हाँ, He has helped us. मतलब उसने अपने लिए बनाया वो जगह यार. टू बी ऑनेस्ट, आई नो बायसनेस बोल सकते हैं, जो भी बोलो भाई, इतना जल्दबाजी क्यों करना यार. मतलब चलो 50 मिलियन ले लो भाई, कम ऑन. वी हैव एटलीस्ट 10 भाई. बाबा रहमान अभी तक चेल्सी में. आई एम जस्ट सेइंग, मतलब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, शाउट आउट टू बाबा आल्सो बाय द वे, बट आई एम जस्ट सेइंग यार. यार क्या ही तो बोले यार. बट एनीवे दैट्स हाउ इट इज. गुरुजी, आई थिंक यू माइट हैव टू गो क्या, मतलब अभी. चलो कोई नहीं भाई. पीपल एवरीवन इन द चैट, बिग शाउट आउट. मैं कंटिन्यू करने वाला हूं स्ट्रीम फॉर अ फ्यू मोर मिनट्स, तो बने रहना. आई एम टेकिंग अ फ्यू मोर कमेंट्स एंड अ कपल मोर टीम्स दैट आई वांटेड टू टॉक अबाउट. लेकिन भाई गुरुजी को एब्सोल्युटली, गुरुजी ओपी हो जाए. एंड अगेन डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आदिदेव गुरु ज्ञान as well as us if you are new to the channels. Absolutely. Then Guruji, see you soon bro. Hoping for the best. अभी तो यार to be honest break है तो थोड़ा chill मार रहे हैं, लेकिन वापस से UCL talks करना ही हमें. And by the way, Guruji knows that Utkarsh is also hopefully available. We have to do who am I semi-finals, which has been pending. Yeah. So we have to come back on that as well. So all the best for that. Guruji preparing well. Perfect. He's going for the trophy. Perfect. Fucking hell. Trophy is mine, bro. But anyways, cheers, guys. Nice meeting you. Nice meeting you, Ankit bhai. Cheers. Absolutely, bro. Bye. Great to see you, Guruji. Always. Guruji and Ankit bhaiya, we have two players in academy, Ben Elliott and watch out them. Chalo, I'm starring that in keeping. मैं follow करता हूँ उनको closely. Karthik Chels, absolutely Guruji OP. James is getting 250k, then Mount should get 200k at least. By Gaurav, मैंने देखा that again you have agreed to the fact that maybe Mount जाने वाला है, लेकिन he should get that as well. Again, looks like it. Again, remember Mount के जो dad है, he is the main agent now. And again, remember that is something that is in the family. So hopefully there is a sentimental conversation happening somewhere down the line. अभी के लिए the guy is being left alone and वो अपने options देख रहा है. Then he'll probably discuss again. वो है exact scenario भी. अब देखते क्या होता है. If Chelsea let Mount go and same City get him along with Bellingham, then the midfield is set for the next 10 years. बिल्कुल, absolutely मैं बोलता हूँ. And again, remember, यहाँ पर जो भी लोग बोल रहे हैं ना, again, मतलब maybe we can agree to disagree. If Mount for me in a 3-4-3 he doesn't start, अगर 4-3-3 में start करता है, and अगर हम rotate करें, horses for courses हम खेले, अगर हम उसको समझाते हैं that you will start 60% of the Chelsea games, ठीक है, maybe even 50% of the Chelsea games, आप अगर Mount हो, maybe you'll think, come on, Mount may not be okay with that, and maybe हमने उतना salary नहीं देना है, उतना extension नहीं देना है. But let's be honest, यहाँ पर सिटी का बात चल रहा है, मैन यूनाइटेड का बात चल रहा है. ऐसा नहीं है कि मैन यूनाइटेड, सिटी और मतलब मे बी लिवरपूल अलग है. अभी के पास अभी लिवरपूल के पास बहुत सारे मिडफील्डर्स है जहां पर दे विल नीड रिप्लेसमेंट्स, लेकिन मैन यूनाइटेड सिटी एक्चुअली हैव अ गुड सेट ऑफ मिडफील्डर्स ऑलरेडी इन माय पर्सनल ओपिनियन इन माउंट्स पोजीशन. तो ऐसा नहीं है माउंट विल जस्ट स्ट्रेट इनटू द स्टार्टिंग 11 हो जाएगा. अगर वो बात कर सकता है तो मींस ही इज ओके टू काइंड ऑफ प्ले अराउंड 60% ऑफ द गेम्स. रिमेंबर दैट. And yes, with all due respect to Manchester United, Man City and Liverpool also, we are still Chelsea Football Club. Mount has been there, done that, or he's won a Champions League for us and he's won stuff for us. ऐसा नहीं कि यार he will not understand how big of a club we are. We definitely can do that. लेकिन again, क्या हम टॉप 4 में आ सकते हैं? वेरी वेरी डिफिकल्ट चांसेस उसका. तो वो एक सेलिंग पॉइंट जो था नेचुरली वो चल जाएगा, नॉट जस्ट फॉर माउंट बट फॉर अदर्स एज वेल जो हम साइन करने की कोशिश कर रहे हैं. एब्सोल्युटली भाई. सब लोग यहाँ पर देख रहा हूँ, क्या बात है, आज लाइक्स बहुत कम हुए भाई. जस्ट द प्रेस ऑफ अ बटन भाई. जो भी लोग लाइक नहीं करे स्ट्रीम को, जैसे मैं बोलता हूँ बहुत बार भाई, आई वुड लव टू नो आप क्यों लाइक नहीं कर रहे हो.
लाइक करना इज नॉट समथिंग दैट विल कॉस्ट यू, इट विल बेसिकली कॉस्ट यू 2 seconds ऑफ योर लाइफ. ठीक है. और अगर आप लोगों को लगता है कि आई स्पीक सम सेंस and the channel has some good content, just back the stream, I would say. And of course, by as we grow, that is as me, my almighty fam grows, you are part of the almighty fam, तो आप लोग भी grow करोगे, and that is how we will grow as a team यार. Come on everyone, again मैं चाहता हूं मैं हर एक कमेंट लूं, आई टेक एज मच एज ह्यूमनली पॉसिबल. आप लोगों को सबको पता ही है भाई, डेफिनेटली. इसलिए मैं चाहता तो मैं बंद भी कर सकता था स्ट्रीम विद जस्ट बेसिकली मी एंड गुरुजी, लेकिन नहीं, मैं सोचा कि यार आई नीड टू रेस्पेक्ट यू गाइस, आई नीड टू टेक फ्यू मोर कमेंट्स. तो भाई सब लोग hit that like button absolutely, and do not forget to subscribe if you're new to the channel, absolutely helps. Top 4 is 1% chance, 99% fate, exactly. लेकिन at least यूरोपा लीग चाहिए, मैं तो बोलता हूँ at least वो चाहिए. Everyone like the stream absolutely. लेकिन हाँ, talking about top आर्सेनल यार थोड़ा सा बात करना ही पड़ेगा. देखते डिफिकल्ट लग रहा है, गुंडोगन आएगा यहाँ पर कंसिडरिंग हमारा जो चल रहा है इन टर्म्स ऑफ द टेबल. लेकिन हाँ भाई, व्हाट डू यू थिंक? आर्सेनल अगेन क्रिस्टल पैलेस के साथ, व्हाट अ विक्ट्री. साका, आप लोग सब बोलिए हु हैज बीन द प्लेयर ऑफ द सीजन. यस आई नो अभी तक खत्म नहीं हुआ सीजन, लेकिन इंटरनेशनल ब्रेक है, सो आई थिंक इट्स अ गुड टाइम टू एक्चुअली सी. मैं सोच रहा था मैं 11 भी बनाऊंगा, लेकिन मे बी आई डू दैट इन नेक्स्ट स्ट्रीम. भाई हु हैज बीन द प्लेयर ऑफ द सीजन? मतलब यू कैन नॉट आर्ग्यू कि यस हालैंड 42 गोल्स एब्सोल्युटली जनरली, लेकिन प्रीमियर लीग में आप देखो तो आर्सेनल आर स्टिल टॉप. और आर्सेनल यस मैनेजरलेस क्रिस्टल पैलेस आप बोल सकते हो, बट स्टिल 4-1 जीते एंड एट अ कैंटर. By Odegaard, Trossard, Martinelli, Gabriel Jesus is back. Then you have obviously Bukayo Saka. Who has been the player of the season for you? कहीं ना कहीं मतलब maybe even you could argue कि यार बेन वाइट क्यों नहीं इंग्लैंड स्क्वाड में, अब वो हम बात कर सकते हैं. लेकिन पुतिन बोल रहे हैं मार्टिन ओडेगार्ड, साका इज डिफरेंट लेवल इन माय ओपिनियन. जिनचेंको इज प्लेयर इन ट्रांसफर सीजन. भाई जिनचेंको, भाई ये मुड्रिक को लाना चाह रहा था आर्सेनल में, और आई नो द काइंड ऑफ गाय दैट ही इज. मैंने एक वीडियो देखा वेयर ही वाज ड्राइविंग आउट ऑफ द स्टेडियम, एंड व्हाइल ड्राइविंग ये बाहर निकल के मुंडी निकाल के बोल रहा यस यस आर्सेनल कम ऑन. भाई वो करना नहीं चाहिए फॉर एनीवन ड्राइविंग, बट दैट इज व्हाट आई वुड से, दैट इज द एनर्जी, द पैशन दे आर सेलिब्रेटिंग. यस सेलिब्रेशन बहुत क्रिटिसाइज हो रहे हैं आर्सेनल के, लेकिन टू बी ऑनेस्ट they kind of deserve that, क्योंकि every game Granit Xhaka is back यार. मतलब that is something जो mentality दिख रही है ना, एक team spirit दिख रही है, and you have to give it to Arteta and co. And I think that for me the player of the season I would like to say Martin Odegaard. Remember he's a young captain, a very young captain. भाई वो कर रहा है week in week out कर रहा है. And again you can argue the main guy for Arsenal is obviously Arteta, क्योंकि यार beat the transfers, मतलब ट्रोसार्ड को लाना कहीं ना कहीं दे हैव वन द ट्रांसफर विंडो. जॉर्जिनियो को लाना, ही कम्स ऑन जब काम करना है थिंग्स को इन द लास्ट 15 मिनट, दैट्स ऑल ही कम्स फॉर. लेकिन मार्टिन ओडेगार्ड बीइंग अ यंग कैप्टन आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, अलोंग विद साका. दैट्स द ऑनेस्ट ट्रुथ. ओनली इफ वी गॉट ट्रोसार्ड इंस्टेड ऑफ मुड्रिक. लेकिन अगेन वो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं देख रहे थे, हम देख रहे थे लॉन्ग टर्म, सो दैट्स व्हाई वी वेंट फॉर मुड्रिक. सो आई थिंक आई हियर दैट इज वेल. हम देख रहे थे मोर इन्वेस्टिंग इन यंगस्टर्स. Fair enough, Gaurav. Again, we have moved on to Chelsea, bro. We'll come back if time permits. Zinchenko unfollowed Modric. Oh, really? I didn't know this. Zinchenko for me is a bit underrated. Fair enough. Trossard have classic dribbling, shooting, passing experience. The beauty of it is that Arsenal have one baller for them this season. That's the sign of progress and possibly champions this year. Hate that second part, but gotta be real. Yeah, absolutely. Looks like it that they might actually become champions. But again, Man City has something to say. I don't know, Man City fans, आप लोग क्या बोल रहे हो? Odegaard has been the player of the season for Saurabh भी. Arsenal deserve that celebration, बिल्कुल. लेकिन again, remember they have not won nothing yet. After यूरोप के बाहर जाने के बाद कहीं ना कहीं आर्सेनल और बार्सिलोना का सीजन में बहुत सिमिलर देख रहा हूँ. I think again these are two managers who are like youngish managers और youngish teams भी है, and then they're kind of going to the next level in league. पूरा फोकस डाल रहे जब वो यूरोप से बाहर हो गए. तो आई थिंक आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड अगेन आर्सेनल को बेसिकली गेटिंग दैट प्रीमियर लीग ट्रॉफी. बट अगेन अभी ब्रेक है तो हम बात करें उसके बारे में. गैब्रियल एब्सोल्यूट वॉल ऑफ अ प्लेयर एंड ही हैज बीन बेटर देन सालिबा दिस सीजन. फेयर इनफ. एफपीएल वाज बैड फॉर जीके. ओके भाई सब लोग, मैंने साका को बोला था साका को कैप्टन बनाओ. किसको कैप्टन रखा आप लोग ने? एंड डू लेट मी नो. आई हैड सजेस्टेड साका एज कैप्टन. यू कैन चेक बैक द स्ट्रीम. साका I think was a good suggestion of captain, nahi? Anyway, Chelsea top 6 chances are narrow है, लेकिन that's a minimum for me. चलो भाई, anyway, we have spoken about Bundesliga, we have spoken about La Liga, we have spoken about Premier League, of course थोड़ा बहुत FA Cup का बात हमने किया है. We have spoken about Liga as well. भाई थोड़ा सा Serie A भी बात बनता है भाई. With me being in the house, you have to speak about little bit Serie A as well. और yes, we'll come back to थोड़े बहुत comments और other matches as well. Of course, El Clasico जिससे हम शुरू किए थे. But by the way, talking about
ला लीगा मुझे मालूम है. ओबामयांग बेसिकली वाज इन बार्सा's ड्रेसिंग रूम. आई डोंट नो if आपको पता है क्या कल रात को, बट देखते हैं if he goes in the next window. बट इंटर यूवे होता, क्विक कॉन्वर्सेशन होगा. सेरिया में भाई नापोली आर बॉलिंग इट जैसे आर्सेनल, इसलिए मैंने बोला एराज आर डेफिनेटली स्टार्टेड माय ओपिनियन. आई थिंक स्पेलेटी डिजर्व्स ऑल द क्रेडिट दैट इज गेटिंग एब्सोल्युटली. और नापोली भी थोड़ा इजी ड्रॉ है इन द चैंपियंस लीग, बट स्टिल एसी मिलान वर्सेस नापोली आई डोंट थिंक इट्स सो इजी एज वेल. तो भाई देना चाहिए नापोली को. वापस से वीकेंड में 4-0 जीती. बट इंटर यूवे नापोली आर टेकिंग द लीग. यूवेंटस अभी जस्ट अबाउट आ सकती है टेक्निकली फोर्थ. दे कैन स्टिल कम फोर्थ. व्हाट डू यू थिंक? एंड दिस वाज द मोमेंट. अब एवरीवन नोज, मैंने वॉच अलोंग के दौरान भी बोला था हैंडबॉल था. आप लोगों को पता नहीं कितने लोग याद है, रिसेंटली हुआ था. Rabio was the player, and that is what referees and VR sucks, bro. Everyone, I don't know if everyone agrees to that. Recently, Juventus का ही Rabio ने एक I think गोल मारा था अगेंस्ट सैम्पडोरिया. Correct me if I'm wrong, chat. Anyone who watches Serie A. वहीं पर बेसिकली द गोल वाज डिसअलाउड. वहीं पर. एंड व्हेन दैट वाज डिसअलाउड, व्हाई वाज डिसअलाउड? मतलब कहीं ना कहीं इंटर गॉट द बैड लक. 1-0 हारी है. रिमेंबर इंटर ने जीता था नापोली के साथ रिसेंटली. इंटर हैव एक्चुअली गॉटन टू द क्वार्टर फाइनल्स ऑफ द चैंपियंस लीग. वी ऑल नो दैट. ठीक है, बेनफिका के साथ है. और यहां पर कमिंग टू सेरिया, भाई दे स्टार्टेड सेकंड. मीनवाइल क्या हुआ? लाजियो ने, एंड एवरीवन, आई डोंट नो इफ यू हैव फॉलोड दैट, लाजियो हैव बीटन रोमा. यस, रोमा ने एक इक्वलाइजर स्कोर किया था. दे वर डाउन टू 10 men एंड लाजियो स्कोर्ड, लेकिन वो इक्वलाइजर got chalked up because of offside, smalling offside थे. तो because Lazio ने they beat Roma, so Lazio all of a sudden has become second, and now Inter are kind of going down, and Juventus are coming up, और Milan luckily despite the loss are still there because Roma भी हार गई. तो 4th, 5th, 6th, 7th जो है ना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है सेरिया के लिए. भाई टॉप 4 जो हो रहा है प्रीमियर लीग में ही नहीं, सेरिया में बहुत इंटरेस्टिंग. बट दिस वन आई वुड लाइक टू नो योर ओपिनियन. नहीं, साका तो कहीं नहीं जाने वाले. अमीन, वी विल सी बार्सा पनिश. ये क्या हो गया भाई? एफपीएल डिस्कशन बिल्कुल हम करेंगे, लेकिन अभी इज नॉट द राइट टाइम टू डू दैट बिकॉज वी हैव बीन स्पीकिंग फ्रॉम 1 hour 15 minutes एंड दिस इज बेसिकली अ राउंड अप स्ट्रीम वेयर वी विल टॉक अबाउट मोर ऑफ फुटबॉल. लेकिन अगेन बिग अप टू सौरदीप, ऑलवेज सपोर्टिंग द चैनल ब्रो. शाउट आउट है आपको एब्सोल्युटली. क्वाड्राडोना माय ड्रीम प्लेयर फॉर बार्सिलोना. दे कैन कम फोर्थ बिकॉज रोमा, एसी एंड इंटर आर सो डैम इनकंसिस्टेंट. बिल्कुल, आई थिंक दैट इज द होल पॉइंट आई वाज ट्राइंग टू मेक. तो भाई डू यू अग्री दैट Chiesa नॉट स्टार्टिंग फॉर यूवेंटस इज द राइट थिंग दो? क्योंकि एलेग्री बॉल 1-0 कब तक जीत सकते हैं? जो पॉटर ट्राई कर रहे थे इन द लास्ट 3 games और नहीं हुआ फाइनली, राइट, विद गैलेगर कमिंग ऑन. तो वहां ऑलमोस्ट कॉस्टिच से शुरू किए. इस बार कॉस्टिच रीपेड जो भरोसा दिलाया था एलेग्री ने, दैट नहीं मैंने गोल किया है बोल रहा है. बट अगेन इट केम आफ्टर दैट रैबियो बॉल हैंड टू बॉल ईदर वेज. लेकिन फिर कॉस्टिच स्कोर्ड. लेकिन फिर भी द फैक्ट है अभी Chiesa शुरू नहीं कर रहे. आई वुड स्टिल से दैट आई थिंक एलेग्री को शुरू करना चाहिए Chiesa को. आई डोंट नो इफ एनी यूवेंटस फैंस ऑन द चैट, भाई सब लोग बोलिए. आई फील दैट कहीं ना कहीं दे आर मिसिंग अ ट्रिक. अने Chiesa लॉन्ग टर्म इंजरी था, लेकिन जितना मैंने देखा है कमिंग ऑन सब्स्टिट्यूट ही इज हैविंग एन इंपैक्ट एंड ही शुड बी स्टार्टिंग डिस्पाइट कॉस्टिच के जो डिफेंसिव एलिमेंट है. दे शुड चेंज द सिस्टम. सिंपल एज दैट. आप जाओ यार, चेंज करो सिस्टम. गो फॉर अ 3-4-3. व्हाई यू वांट प्ले 3-5-2? आपको क्यों जाना है प्रॉपर बेसिकली ओल्ड स्कूल डायनासोर फुटबॉल क्यों खेलना है यार? आई नो ही गॉट अ विन, फिर भी मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूं यूवेंटस को. अच्छा, मीनवाइल इंटर मिलान, सिमियोने इंजागी, ही स्टार्टेड विद लुकाकू डिडंट हैव सच अ बैड गेम, लेकिन अगेन आर्गुएबली उसको स्कोर करना चाहिए था. मैं तो चाहता हूं कि लुकाकू स्कोर करे, क्योंकि कहीं ना कहीं चेंज कर सकती है माइंड इंटर जस्ट अबाउट. एज पर द न्यूज वो आ रहे चेल्सी में, लेकिन चेल्सी आर नॉट गोइंग टू बी इंटरेस्टेड इन relying on him. That's the news, by the way. Chiesa to Chelsea, Todd Boehly masterclass incoming. भाई लेकिन लेफ्ट साइड कितने आएंगे भाई पुदिन? लेफ्ट साइड बेसिकली you already have Modric, you already have basically Sterling, Felix. Looks like we'll probably sign him than Chiesa. लेकिन हम बहुत close थे to sign him as well. According to me, the best transfer of the season is Casemiro. He single-handedly, yes, I cannot disagree with that. लेकिन again, January window का, I'm saying that it might be Trossard. But anyway, Chiesa didn't start because of the injury. He came on a substitute but had to be substituted out due to injury again. Yes, I know eventually जो हुआ है, लेकिन recently last 1 महीने के बात कर रहा हूँ, last 1 month में actually Chiesa also was not unfit at all. So there was a chance कि यार वो शुरू कर सकते थे, ज्यादा मिनट्स दे सकते थे for him to get back to fitness proper. लेकिन he's not done that. I know after a long term injury आप बहुत careful रहते हो, लेकिन I think it's a bit too careful by Allegri and that is why he's not match fit और इसलिए वापस injured in my personal opinion. But anyway, ये क्या 3-5-1-1 खिलाता है Allegri? बिल्कुल, I think he should, honestly speaking, 3-4-3 जाना चाहिए. That's what he should go with.
लेकिन अगेन बिग विन फॉर यूवेंटस वहां पर. Oh yes, I read that absolutely. Oliver Kahn said that Bayern won't mourn on losing the title as they can face Barcelona in the UCL group stage. Oh, that's just fun, yaar. Come on. लेकिन तनिष भाई कुछ तो बहुत होंगे. Dortmund getting a 6-1 victory, bro. Crazy over Cologne weekend में. Chiesa can play right wing forward. नहीं, but to be honest, he's not as effective in the right wing forward. He can play, but his ideal position is left wing forward. सच में बोलूँ तो. But again, भाई everyone, let's actually hit that like button. Okay, defense has been a real issue for Milan. Yes, बात करनी यार. Milan lost 4-1, 3-1 sorry to Udinese. उफ, पेनफुल यार. मेरा सैटरडे बहुत बुरा गया. यहाँ पर मैं गुरुजी को कंग्रेचुलेशन बोलना भूल गया भाई. काइंड ऑफ बीएफसी नॉट विनिंग, बट आई नो मुंबई आल्सो नॉट विनिंग. बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है दैट सैटरडे का जो था बीएफसी लूजिंग, चेल्सी ड्रॉइंग एंड मिलान लूजिंग वाज वेरी बैड फॉर मी. बट मिलान भाई, बहुत लोग बोल रहे हैं एंड यहाँ पर मैं थोड़ा डिसएग्री करना चाहूंगा विद लॉट ऑफ पीपल इन द मीडिया. व्हाइल आई अग्रीड कि प्रीवियसली टोमोरी को रहना चाहिए था इन द स्क्वाड, जितना मैंने देखा. और पीपल, आई डू ट्राई एंड वॉच ऑलमोस्ट एवरी गेम ऑफ मिलान, सच में बोलूं तो. ठीक है, आई एम टेलिंग यू, टोमोरी हैज नॉट बीन कंसिस्टेंट. यस, वो ही वाज इन द चैंपियंस लीग अगेंस्ट स्पर्स, द मैन ऑफ द मैच इन द सेकंड लेग. थियाओ हैज बीन बेटर आर्गुएबली सेंटर हाफ में, लेकिन जनरली स्पीकिंग आई थिंक टोमोरी हैज नॉट बीन सो कन्विंसिंग. और एट अ कैंटर भाई ओडिनेजी ने स्कोर कर दिया 3 गोल एट अ कैंटर. मतलब कहीं ना कहीं मिलान बहुत लकी है कि रोमा हार गई इस वीकेंड. एंड आई एम एक्चुअली वेरी कंसर्न फॉर मिलान राइट नाउ. चेल्सी नहीं, मिलान भी बहुत कंसर्निंग है, क्योंकि इट वाज बेसिकली एक लंबा गैप के बाद वी वन द स्कुडेटो, एंड नाउ अगेन इन दैट पोजीशन जहां पर वी आर नॉट इवन गेटिंग टू टॉप 4. सो इट्स नॉट रियली गुड. या ही इज इंजरी प्रोन प्लेयर है, लेकिन ही इज कम बैक यार. ही इज कम बैक. 1 महीना से ज्यादा हो गया कार्तिक. Again, thanks a lot for that. Scoring goals has been an issue too. Looking at the last 10 games, Milan. Acha, by the way, Zlatan Ibrahimovic OP, bro. Everyone, Zlatan OP in the chat. Zlatan, by PSG fan, we talk football. Zlatan OP in the chat ho jaye. Bhai, I'm telling you, the guy एक लकी भी था. पेनल्टी हैज बीन रीटेकन. यस, आई नो हारी है 3-1, लेकिन एक गोल मारा ज़्लाटान इब्राहिमोविच एंड ही बिकम्स द ओल्डेस्ट प्लेयर टू स्कोर एवर इन द सेरी आ यार. 41 ईयर ओल्ड. पेनल्टी लिया, यस इट वाज रीटेकन एंड deservingly so, लेकिन at least he scored to Zlatan OP यार. What a legend for Milan. But anyway, but I agree with this. Amandeep का point, I agree with this. Milan wants RLC. He won't change them much, to be honest, with all due respect to RLC. Will Bundesliga title race affect Bayern and Bayern City UCL clash? Yes, that's what मैंने I think we discussed that during the जब हमने मॉक ड्रॉ किया था ना, वी डिस्कस दैट व्हेन सच अ ड्रॉ केम आउट, कि कहीं ना कहीं फॉर मैन सिटी, बायर्न म्यूनिख, चेल्सी, रियल मैड्रिड, it will really depend on where they are in the league. Or that is why I think maybe Real Madrid have an advantage over Man City, Bayern Munich and Chelsea. उस side draw के basically मैं बोल रहा हूँ. We need Kier, Kalulu and Thiago trio back. They played well against Spurs. Fair enough. नहीं, fair enough. In fact मैं देखता हूँ Simon Kier is someone that brings एक calmness लाते. तो I agree with you. But even Benacer यार, अमनदीप, again all the people who follow Serie A भाई, generally Benacer हमारे साथ लिंक थे चेल्सी के साथ. जब वो साइन किए ना, यस ही वाज इंजर्ड, लेकिन जब साइन किए कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन, फॉर व्हाटएवर रीजन हिज स्टैंडर्ड हैज ड्रॉप्ड एज वेल. आई थिंक जो गोल आया था, फर्स्ट या सेकंड गोल, आई रिमेंबर टोमोरी और बेनेसर दोनों मिस्टेक्स किए थे. आई थिंक दो बोथ वर एट फॉल्ट इन माय पर्सनल ओपिनियन. Yes, Zlatan is right up there among the legends. Yes, बिल्कुल, that's the mentality he has. इसलिए मैं was surprised कि वो UCL squad में नहीं है मिलान के. I was little surprised. Yes, वो अभी रिलाई नहीं करोगे आप उस पर, लेकिन come on, the guy brings so much experience and respect आती है यार. Come on, top 4 qualification is worth at least an extra 30 million. And yes, for people out there, Milan, generally Italian clubs are struggling when it comes to money. And that is why बहुत important है. मैं यहाँ पर फतेह ओपी हो जाए इन द चैट भाई. फतेह आप लोगों को पता है, वेरी रेगुलर पैनल मेंबर हमारे भाई. ही इज एन इंटर अल्ट्रा. तो द फर्स्ट थिंग जब मैंने मैसेज किया फतेह को व्हेन दे गॉट थ्रू पोर्टो, हिज रिएक्शन वाज लाइक, ओह माय गॉड, कम ऑन, वी आर इनटू द क्वार्टर फाइनल्स, वी माइट हैव अ चांस एट द ट्रॉफी. वो नहीं था. हिज रिएक्शन वाज, ओके ग्रेट, दैट इज ऑलमोस्ट अ रिलीफ कि भाई हमें कुछ पैसे मिलने वाले टू बी इन द क्वार्टर फाइनल्स ऑफ द चैंपियंस लीग. And every stage you get some money. That is what I'm saying. So same cheese, even top 4. Exactly. Amandeep, very good point. Maldini is so incompetent. Sven Botman को जाने दिया और रोमानियोली को भी नहीं दिया extension. नहीं, to be honest, Amandeep, it's not about just Maldini. It's about even the players. तो कहीं ना कहीं
attraction for Serie A is something which is lacked in recent years. और वो something is something that they need to work on as a league. मैं बोलता हूँ, it's just not Maldini. Yes, Milan has एक पुल है अभी भी, मैं बोलता हूँ, लेकिन Serie A generally के पास उतना पुल नहीं है, and that is an issue more compared to basically a Premier League. But again, that's a problem of हर एक लीग का, सिवाय प्रीमियर लीग. बट उसके बारे में क्या ही तो हम बात कर सकते हैं. बट अगेन पीपल, एवरीवन यहाँ पर अगेन आप लोग बोलिए. आई थिंक प्रीटी ऑब्वियस क्वेश्चन है, लेकिन भाई इतना जो हमने देखा है मार्च में, विच वॉज योर फेवरेट मोमेंट भाई? किसी भी क्लब के फैन हो आप. वी हैव डिस्कस्ड लिटरली ईपीएल, एफए कप, ला लीगा ऑफ कोर्स, एल क्लासिको, देन वी हैव डिस्कस्ड लीगा, सेरिया एंड ऑफ कोर्स बुंडेसलीगा भी हमने डिस्कस किया है. लेकिन मार्च के महीनों को जनरली सम अप करो तो भाई जो भी क्लब के आप फैन हो, डू लेट मी नो व्हाट वाज द बेस्ट मोमेंट इन द लास्ट 3 वीक्स जो आपने फेस किया है. अगेन प्रीटी श्योर यहाँ पर बार्सा फैंस विल बी लाइक हैट्रिक ऑफ एल क्लासिको विंस, वही होगा, दैट विल बी द बिगेस्ट विक्ट्री. लेकिन यस ऑफ कोर्स फॉर द चेल्सी फैन, दैट डॉर्टमंड के साथ जो विक्ट्री था ऑन एग्रीगेट भाई, दैट वाज एब्सोल्युटली वेरी गुड इन माय पर्सनल ओपिनियन. अगेन इफ यू टॉकिंग अबाउट मे बी बायर्न म्यूनिख फैन, no two ways about it, as much as वो नहीं है top of the table, you can definitely say Bayern Munich के लिए भाई beating PSG was huge. Yes, PSG के लिए very very low moment अभी हो रहा है generally speaking. Again अगर लिवरपूल फैन हो तो not great moment, लेकिन again प्रीमियर लीग में I still feel कि लिवरपूल are in pole position to finish 4th position. मुझे लगता है भाई. मैंने एक बात तो बात ही नहीं किया भाई, एक बात तो बात करनी थी, मैं कैसे भूल गया. Everyone talking about Premier League quickly before ending the stream. भाई everyone again likes कितने हुए? 350 likes हो गए. Let me know. But this thing, will Conte stay? The big question. जो rant, और किसी ने अगर बाई चांस rant देखा नहीं है भाई, will Conte stay at Spurs? क्योंकि आफ्टर दैट मुझे नहीं लगता दैट ही इज गोना स्टे, एंड ऑफ कोर्स ही डज, ही शुडंट स्टे. मैं एग्री करता हूं जो कॉन्टे ने बोला है, बट दैट्स द बिगेस्ट पार्ट, यू नो. एज अ अगर आप न्यूट्रल जैसे सोच रहे हो, आई थिंक दैट वाज अ मोमेंट इन द मीडिया भाई, एंटरटेनमेंट भरा मोमेंट था, लेकिन बहुत सच बोला कॉन्टे ने कहीं ना कहीं. नहीं, डॉर्टमंड विन स्टैमफोर्ड ब्रिज, दीपक बोल रहे हैं रियल मैड्रिड इंटर विल लिसन टू ऑफर्स ऑफ ब्राहिम डियाज एंड टू. यस, एंड दैट इज व्हाट मैंने देखा है. लेकिन वही मैं बोल रहा हूँ, मिलान के पास इतने कम पैसे है भाई कि ब्राहिम डियाज भी नहीं ले सकते. मतलब क्या ही तो बोलूं, 100% ब्राहिम डियाज रहने चाहिए. कल भी भाई ही एक्चुअली हैड अ मोमेंट जहां पर एक बढ़िया क्रॉस था एंड ही प्रोबब्ली शुड हैव गॉट एन असिस्ट, बट एनीवे क्या ही बोल सकते हैं. आई थिंक ब्राहिम डियाज रहने चाहिए. पीएसजी फैन पर हमारे पास कुछ नहीं है, सॉरी ब्रो, बट कोई नहीं. Ronaldo free kick. Oh, by the way, shout out to him. Absolutely. I know this situation is mouth watering and funny for rivals, but whatever Conte said was pure facts. Bilkul. And something that true fans want to convey. Bilkul. See, that, so आप मैंने वही बोला है. Absolutely. 3-1. रौनक बोल रहे हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड का 3-1 वर्सेस फुलहम प्लेइंग द सिटीएस फुटबॉल. Fair enough. Congratulations यार. Against Brighton, by the way, Brighton are cooking. वो easy नहीं रहेगा semis. I'm telling you. It hurts me, but या देखते हैं भाई. एनीवे कॉन्टे वांट्स टू बी सैक्ड, ही लीव्स टॉटनहम एंड एंड ऑफ भाई. लेकिन कहां जाएंगे टॉटनहम छोड़कर? दैट इज द पॉइंट. वेयर डू यू थिंक टुकल, कॉन्टे आर मैनेजर्स व्हिच विल बी अवेलेबल यार, पॉसिबल इन द समर? वेयर डू यू सी देम गोइंग? और मुझे लगता है जैसे गुरुजी ने भी बोला था, आई डोंट थिंक यहां पर Diego Simeone is leaving. I feel Diego Simeone is not leaving Atletico Madrid, क्योंकि मैंने एक्चुअली देखा उसके रिएक्शंस देखा रिसेंट मंथ में. आई नो अप अंटिल जनवरी एंड फरवरी बिगिनिंग वो एक इशू था, लेकिन लास्ट एक महीने में मैंने देखा रिएक्शंस ऑफ Diego Simeone. ही इज still fighting for that club Atletico Madrid. मुझे लग रहा है he is still doing that, और he will try his best to overtake or at least be as close to Real Madrid in the table. ये मुझे लग रहा है that Diego Simeone will do, and मुझे नहीं लगता he'll be leaving. Where will Conte go? Where will Tuchel go? Let me know. गौरव बोल रहे हैं टू एसी मिलान. नहीं, as much as I would love him and I know Pioli, to be honest, he has bought a season क्योंकि स्कुडेटो जीता है, but एसी मिलान के पास पैसे नहीं है. कॉन्टे वुड वांट टू गो टू अ क्लब जहां पर पैसे मिले उसको. यस, इटली इज हिज थिंग, लेकिन अगेन यूवेंटस एक स्टोरी है. कैन ही गो बैक? मे बी, बट अगेन यूवेंटस अगर टॉप 4 है ओनली देन आई फील, अदरवाइज वेरी वेरी डिफिकल्ट. इंटर और रोमा आर द टू लाइकली ऑप्शंस. अगेन रोमा आई वुड लाइक टू डिसएग्री एज मच एज जोसे मोरिन्यो है यार अभी. आई नो बाय द वे जोसे मोरिन्यो टैमी अब्राहम को क्यों नहीं यूज कर रहे हैं स्टार्टर, आई डोंट नो, बट एनीवे. बट अगेन इंटर मिलान सेम प्रॉब्लम भाई, उनके पास पैसे नहीं है लुकाकू खरीदने के लिए यार. कहां लाएंगे कॉन्टे को? आई डोंट थिंक सो. ही लव्स लुकाकू, रिमेंबर. ये तो कंफर्म्ड है कि हमारे क्लब. फेयर इनफ. नहीं स्वैप, आई हियर यू. टॉटनहम फैन द हाउस. सिमिने नॉट लिविंग मींस फेलिक्स हमारा है. या फेलिक्स भाई, हमने कीप सेल लोन वाला स्ट्रीम किया था, उसमें मैंने बोला ही था फेलिक्स को हमने करना है भाई, डेफिनेटली.
ओ ये सुशांत, ब्रिलियंट आइडिया ब्रो, समथिंग इनफैक्ट जनरली सुशांत, आपको पता ही है, सुशांत भाई नोज इट, बिग अप, आपको शाउट आउट भाई, एवरीवन हियर। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट वॉइस करना जितना हो सके सेरिया के बारे में, बट अगेन मैंने नोटिस किया है ओवर द लास्ट व्हाट ईयर एंड हाफ दैट बेसिकली मिलान का वी डोंट हैव मेनी टेकर्स, सो somewhere down the line the focus on Milan automatically subconsciously becomes less मेरे साइड से, लेकिन मैं चाहता हूँ कभी भी टाइम मिले तो मैं करना चाहता हूँ बात अबाउट मिलान, अबाउट सेरिया जनरली स्पीकिंग, लेकिन हाँ आई वुड लव टू डू दैट फॉर श्योर। देखते हैं, मतलब विल प्रॉब्ली यू नो थोड़े और वीडियोस निकालेंगे यार, अभी डेफिनेटली देयर इज अ लॉट ऑफ कंटेंट प्लान्ड। भाई यहाँ पर देख रहा हूँ कितने, आर वी नॉट टू 300 लाइक्स आल्सो, सीरियसली कम ऑन एवरीवन, भाई लाइक बटन तो दबाइए, लेकिन डेफिनेटली लेट्स हिट दैट बेल बटन यार, बेल नोटिफिकेशन आइकॉन फॉर ऑल नोटिफिकेशंस। और बाय द वे हमारे 2 चैनल्स है यहाँ पर, जो भी है जो बेसिकली देखना चाहता है न्यूट्रल वॉच अलोंग्स एज वेल एज बेसिकली समवन हु इज इंटरेस्टेड इन एफपीएल, समवन हु वांट्स फीफा गेमिंग, समवन हु वांट्स बेसिकली क्रिकेट शोज, भाई वो सब आपको मिलेगा ऑलमाइटी स्पोर्ट्स प्लस पे। यस, फुटबॉल, क्रिकेट एंड रेस्ट ऑफ स्पोर्ट्स भी करते हैं वहां पर, लेकिन ऑलमाइटी स्पोर्ट्स प्लस पे आपको मिलेगा। भाई एवरीवन वाचिंग, 150 लोग देख रहे, सब लोग लाइक बटन दबा दीजिए, सब लोग सब्सक्राइब कर दीजिए यहाँ पर, एंड ऑलमाइटी स्पोर्ट्स प्लस जो हमेशा लिंक रहता है नीचे, एज वेल एज अपैरल। एंड shout out again to our GOAT members, Darren, we talk football, we have our coaches। भाई मैंने आज एक पोस्ट डाला है, अगेन बिग अप टू ऑल द मेंबर्स एंड मॉड्स, भाई जो भी मेंबर बनना चाहता है और इज नॉट एबल टू, check out the perks, definitely give it a shot, and again big shout out to people to kind of gifting memberships as well। At the same time there's a prize for the prediction league winner at the end of the year, but again we have to get to 10k, come on, let's get us to 10k as soon as possible। सबसे पहले तो 8k कर दीजिए भाई, इस हफ्ते में 8k कर दीजिए, and not just that, FPL सब सब्सक्राइबर्स के लिए there's a winner in the end of the season, so there'll be a prize for these two, remember, और hopefully we'll get to 10k as well। हाँ, दोनों में से एक, आई हैव टू पुट माई हेड मोर देन हार्ट, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग फेलिक्स इज द बेटर प्लेयर एंड मोर इम्पैक्टफुल, लेकिन अगेन डिफरेंट प्लेयर्स है, मेरा आंसर बोथ रहेगा। आई वुड बी ओके विद नॉट गेटिंग अ न्यू स्ट्राइकर। सच में मैंने वही बोला था कीप सेल लोन में, आई एम ओके विद नॉट गेटिंग अ न्यू स्ट्राइकर, बट आई वुड लाइक टू कीप बोथ फेलिक्स एंड मेसन, ये मेरा आंसर है, सिंपली पुट, जस्ट दैट्स माय आंसर। मतलब इवन इफ नीड बी, दावेदार फोफाना को लोन कर दीजिए, ब्रोया I know he's coming back only in November, but loan him. But I would say that just keep Felix and Mason. I think these are someone that I would want to see. Absolutely. Arey, let's see. Absolutely, bro. We need Indian Rossoneri on fan channel. बिल्कुल. What about Man United? भाई हमने काफी डिस्कस किया है. But we discussed about almost all the teams यहाँ पर. Just an unrelated question. Are you going to watch any RCB game live? और आई एम गोइंग टू वॉच। भाई मानव पहले बोलना था यार, टिकट साथ में ले लेते, बट कोई नहीं। लेट्स सी यार, अभी तक मैंने टू बी ऑनेस्ट डिसाइड नहीं किया। आई नो फर्स्ट फ्यू गेम्स के तो टिकट्स आर ऑलरेडी गॉन, तो मैं देखूंगा। आई विल ट्राई टू सी माय शेड्यूल हाउ इट इज। टू बी ऑनेस्ट, आफ्टर मेरा जो कांड हुआ था ना रिसेंटली, आई डोंट नो पीपल नो, मेरा मोबाइल चोरी हो गया था, तो आई एम लिटिल बिट थोड़ा सा केयरफुल अबाउट पब्लिक प्लेसेस डूइंग व्लॉग्स, बट देखते हैं, मतलब होपफुली आई विल बी एबल टू डू इट। मन तो काफी यार मानव, टू बी ऑनेस्ट, सच में बोलो तो, यू नो दैट माय लव फॉर आरसीबी इज डेफिनेटली देयर, लेकिन ऑलमाइटी स्पोर्ट्स प्लस पे हम और डिस्कस करेंगे, एंड बिफोर दैट आई विल चेक इट आउट एज वेल। मानव डीएम मी ब्रो, डेफिनेटली विल सिंक अप फॉर श्योर, और मीटअप भी करना है बैंगलोर में। यस, दैट्स आल्सो पेंडिंग। पॉटर इज बिल्डिंग हिज टीम अराउंड काई। आई थिंक मोर इम्पोर्टेंटली काई इज द ओनली स्ट्राइकर अभी तो उसके साथ खेल रहा है, दैट्स व्हाट आई सीम्स लाइक। लेकिन एंजो फर्नांडिस, फेलिक्स, काई, दे आर अंडरस्टैंडिंग ईच अदर कहीं ना कहीं। आई वुड नॉट माइंड कीपिंग देम ऑल। मेसन माउंट भी डेफिनेटली। Keeping Felix will be expensive more than keeping Mount. That's a fair question, comment. Letting Christensen go, नहीं, क्रिश्चियनसन का इतना नहीं। Yes, I would have liked अगर क्रिश्चियनसन खुद रहना चाह रहे हो, but the fact is he himself also did not want to stay in that period which was a low point. तो कहीं ना कहीं इसलिए हम थोड़ा सा खफा थे उससे for a couple of months. I remember towards the end of last season. लेकिन कोई नहीं, मतलब मैं चाहता था बैक इन द डे, इफ यू आस्क मी, इवन नेथन आकी को रखना चाहता था मैं मुझे पता था नेथन आकी विल बिकम द प्लेयर दैट ही इज राइट नाउ। मानव इज इन द हाउस, मैन सिटी फैंस, यू नो हाउ गुड नेथन आकी हैज बीन प्लेइंग। नेथन आकी और बहुत अडैप्टेबल प्लेयर है। आई थिंक ही इज समवन दैट आई एक्चुअली वांटेड टू कीप मोर इन चेल्सी। हां, वेरी वेरी अनपॉपुलर ओपिनियन था ये, बट एनीवे दैट वन। इवन रायन बर्ट्रेंड को रखना चाहता था मैं, वो थोड़ा सा आई वाज प्रूवन रॉन्ग, बट दैट्स हाउ इट इज। थोड़ा सा है यार, चेल्सी एलिमेंट है ऑलवेज इन मी। अगेन लॉट ऑफ टारगेट, लेकिन पैसे पर आ जाते हैं। बी केयरफुल। नहीं, इसलिए मैं थोड़ा सा ये हो जस्ट टू डू व्लॉग्स एंड ऑल, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज रिसेंटली मैंने वो फेस किया था ना, नथिंग एल्स, बट अदरवाइज आई वांट टू गो फॉर श्योर।
या एग्जैक्टली, मैंने देखा था मानव, आई एक्चुअली चेक्ड इट आउट बट आई लाइक नो चांस, बट देखते हैं। भाई बिल्कुल, विल बी टॉकिंग लॉट्स ऑफ इट सुशांत भाई, अगेन हमने करना है और भी स्ट्रीम्स भाई। पीपल हु एम आई इज बैक यहाँ पर ओवर द कोर्स ऑफ दिस वीक, वी आर हैविंग शॉर्ट्स और कंटेंट इज प्लान, जहाँ पर सुशांत भाई इज आल्सो रिकमेंडेड अ कपल ऑफ देम। ऑलमाइटी स्पोर्ट्स प्लस पे रिमेंबर देयर इज अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स अपार्ट फ्रॉम फुटबॉल भी, तो वहां पर हम हमारे बहुत सारे कंटेंट इज प्लान्ड फॉर द कमिंग वीक। तो भाई भूलिएगा मत टू हिट दैट बेल नोटिफिकेशन आइकॉन for all the notifications. I hope everyone is getting a notification अब, reminders as well as जब हम लाइव जा रहे हैं, नहीं तो ये एक और प्रॉब्लम है, ये एक और प्रॉब्लम है। एग्जैक्टली भाई, पहले तो मैचेस का भाई 2100 था मिनिमम, दैट्स क्रेजी ब्रो, इट्स रियली बैड, बट एनीवेज व्हाट इट इज, बट कोई नहीं, विल कम टू दैट, यस दैट्स पेंडिंग एज वेल, डेफिनेटली हमने बात करना है, वील प्लान। बाय द वे टॉकिंग अबाउट दैट रिमाइंड्स मी भाई, याद रखिए 10:30 बजे, इनफैक्ट 11:45 बजे 10:45 PM वी आर लाइव ऑन श्रेय एफसी। तो भाई श्रेय एफसी आपको पता ही है, अगेन ऑलमाइटी फैम का पार्ट है यार, श्रेय एफसी पीपल डू नॉट फॉरगेट। आज भाई लेट्स हैव डिनर अभी, लेकिन अभी श्रेय एफसी को डेफिनेटली जोड़िएगा एट 10:45 PM, ठीक है सब लोग। हु एम आई, व्हाट इज दिस रियली, रियली दीपक भाई, मच लव फॉर दीपक टू सपोर्टिंग भाई, टू बी ऑनेस्ट आई वुड लाइक टू proudly say that I think that is something that we have done among a lot of other playlists and series over the last couple of years. लेकिन who am I something we have done 4 series now. पहला सीरीज था चेल्सी के बारे में, दैट्स अ क्विज शो बाय द वे दीपक। सो पहला सीरीज था चेल्सी के बारे में, सेकंड था ईपीएल, ऑल ईपीएल, थर्ड था ऑल टॉप 5 लीग्स, ठीक है, एंड थर्ड वाला बहुत अच्छा लगा लोगों को, बहुत इंटरेक्टिव टाइम्ड क्विज शो है, कंपटीशन है, एंड द फोर्थ वन वी हैव डन शॉर्ट्स। तो 4 सीरीज हुए, थर्ड वाला का सेमीज बाकी है, सेकंड वाला का भी भाई वी हैव बेसिकली क्वार्टर्स रिमेनिंग, तो वी हैव अ लॉट दैट इज पेंडिंग ऑन द प्लेट, तो भाई हम करेंगे एब्सोल्युटली। अपार्ट फ्रॉम दैट आल्सो लॉट ऑफ अदर प्लेलिस्ट हम कर रहे हैं दोनों ही चैनल्स पे, तो डू नॉट फॉरगेट दैट। वंडरला मीटअप करो। आई एम स्कैर्ड ऑफ हाइट्स ब्रो, बट कोई नहीं, करते करते करते, विल आई सेंड अ मैसेज, मे बी दिस समर वी हैव टू डेफिनेटली मीट यार, एटलीस्ट पीपल इन बैंगलोर। अरे थैंक्स यार, मच मच लव फॉर यू फॉर सेइंग दैट, एब्सोल्युटली लॉट ऑफ बाकी भी है, आई विल नॉट गो देयर, लेकिन बहुत और भी है पेटेंटेड वाला, आप देख सकते हो आराम से, आपको पता है सुशांत भाई, बट कोई नहीं, डू चेक आउट फॉर पीपल हु वांट कंटेंट जस्ट टू हैव फन, टू टेस्ट योर नॉलेज एट द सेम टाइम, यू नो, होपफुली इट टीचेस यू समथिंग भाई। I think who am I, in my personal opinion, is one thing that you should see, as in even as a viewer मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर, not just as a content creator, absolutely भाई। लेकिन again सगुन, दिनेश, आदि भाई, बहुत लोग मैं देख रहा हूँ, बहुत सारे कमेंट्स मैंने मिस किया होगा, आई ट्राई एंड टेक इट इन द नेक्स्ट स्ट्रीम, अगेन आई ट्राई एंड टेक एज मच एज कमेंट्स एज पॉसिबल। मैं यहाँ मैं देख रहा हूँ भाई 300 लाइक्स हुए जस्ट, आवर टारगेट वाज 375, कम ऑन, let's get to the likes, and do not forget we are always a fan channel for all to see. Again big congratulations to Barcelona, commiserations to Real Madrid, लेकिन Real Madrid हम बात करने वाले about second leg of Copa del Rey in the next week, और उसके next week में भाई Chelsea भी है, तो we'll be talking about that for sure, something to look forward to for sure. Chelsea meanwhile we have discussed already, लेकिन हाँ, Manchester United, Man City, congratulations भाई, FA Cup semi-finals going to Wembley, that is a big deal, लेकिन again Juventus fans थोड़ा सा होप लग रहा है टू गेट इनटू टॉप 4, दैट्स इंटरेस्टिंग, एंड आई नो डॉर्टमंड फैंस काफी एक्साइटेड होते हुए ऑल ऑफ अ सडन, आई नो लास्ट हफ्ता इतना नहीं अच्छा गया, लेकिन लास्ट 2 डेज हैव बीन रियली गुड, कम ऑन लेट्स गेट देयर एब्सोल्युटली। चलो हम बात करें, यस बाय द वे ये वाला चीज मैं देखा हूं, बट आई डोंट सी सेविया हैविंग द मनी ईदर, सुवादी, दैट्स अ प्रॉब्लम, बट लेट्स सी, वी विल टॉक अबाउट इट ओवर द कोर्स ऑफ द वीक एंड हाफ भाई। अगेन 10:45 Shrey FC, everyone, and hit that bell notification icon on दोनों channels. अभी के लिए no matter what up the chairs, लेकिन Forza Milan as well. But congratulations to the winners over the weekend, and a lot of things to come on the channels this week. See you all, love you all.